All right, let's do this. Dot Jpeg Bhai closes Mr. Budgetia with a high ticket. Let's see क्या थंब रूल्स वो यूज करता है जिससे वो ये अचीव कर पाता है. This session, season 1 episode 5, the final high five, हमेशा की तरह ये थोड़ा सा जेंटल पोलाइट इजी गोइंग सेशन होगा. पूरा कन्वर्सेशंस पे it's all the words clean and ध्यान से सुनियो. And but make sure that you have completed and understood the importance of being a specialist. अभी मैंने ये पहले भी कहा है, एक हल्का सा रिकैप यहाँ पे, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आप स्पेशलाइजेशन क्रैक नहीं कर लेते या कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रैक नहीं कर लेते in your service, in your, either you are a firm, either you are an individual running a service. I won't say it's like कि हाँ आपने कुछ, आप इंडिविजुअली ऑपरेट कर रहे हो, बस एक लेबल लगा लिया और सोचा कि अभी now clients will or prospects will consider me and pay me the higher amount. ऐसा नहीं होता. Like I can get paid on my own name if I am expert in that particular domain. So what anybody would love to pay for is expertise. किसी को भी एक जर्नलिस्ट को वो अमाउंट पे करने में अच्छा नहीं लगेगा, राइट? बट एज वी डिस्कस्ड, सबकी अपनी जर्नी है. यू स्टार्ट बाय बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड देन वंस यू एक्सप्लोर, वंस यू हैव एवरीथिंग you know, then somewhere down the line you zero down, you narrow down on that niche that you want to focus on, which is understood. Like everybody goes through that path. But if you are in the phase 1 right now, jahan pe you are exploring, don't get overwhelmed. It's okay. Abhi, it's your time to explore. It's your time to make portfolios and case studies as much as you can and pass through this journey. Or if you are someone who knows very well that I know I have not passed this journalist journey, but I very well understand after analyzing the sectors that we discussed in the previous episodes and mediums, like disciplines, like as we say, various disciplines we have in our industry. So I've been through all the disciplines, I've been through all the sectors, and I guess I know कि किस direction में मुझे करना है, and what is a complete no for me, what is a complete yes for me. Or I'll just explore between 3 to 4 of this and then go ahead and then say no to the rest, because it will be a very hard call. We all are getting pushed right now in this season to take some hard business decisions or some life decisions, I would say. तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगा आप लोगों को, थोड़ा सा आपको टेंशन भी आएगा. बट देन once you know knock this knock this fear down, इसको आप ऐसे फाइट मार दोगे ये फियर को, इससे बाहर निकलोगे ना आप एक बार, तो अलग मजा है. फिर 100% मतलब अलग लेवल की थॉट क्लैरिटी मिलेगी, जिससे आप आगे और ग्रेजुअली ग्रो भी कर पाओगे प्लस स्केल भी कर पाओगे. नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, बिकॉज अनटिल अनलेस यू आर ऑफरिंग समथिंग इन द मार्केट जिसकी मार्केट को बहुत अच्छी नीड है एंड आप वो नीड सॉल्व कर रहे हो. आइडेंटिटी डिजाइन आई अंडरस्टैंड, ब्रांडिंग आई अंडरस्टैंड, बट उसमें भी थोड़ा और आप कैसे नैरो डाउन कर रहे हो, किसके लिए प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे हमने डिस्कस किया मिशन स्टेटमेंट. Mission statement, again, I'm not encouraging you towards some fancy words, right? I'm not encouraging fancy words here. I'm encouraging your thought clarity. कि आप पेपर पेन लो, लिखो कि किसको सर्विस देना चाहते हो, क्या सर्विस देना चाहते हो, और आप में ऐसी क्या खास बात है वो जो आप वो सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हो. That's it. And then you articulate that with a clear cut mission statement so the market comes to know. अभी वी आर जस्ट टेकिंग द अपॉर्चुनिटीज वी गेट एट हैंड. कुछ ना कुछ रोज ऐसे अपॉर्चुनिटीज लाइफ थ्रो कर रही है, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, चल रहा है. बट द मोमेंट यू बिकम द डिसीजन मेकर्स ऑफ योर ओन अपॉर्चुनिटीज कि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करनी है, सो टू डू दैट यू हैव टू थ्रो अ क्लियर कट मैसेज इन द मार्केट.
तो वो क्लैरिटी आपके माइंड में आनी बहुत जरूरत है. मिशन स्टेटमेंट क्राफ्ट करना, उसको मैं फैंसी लैंग्वेज यूज करना, वो सब मतलब सेकेंडरी. प्राइमरीली थॉट क्लैरिटी लेके आओ. देन इफ ऐसा कोई अगर आप कुछ सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे ना, जिसमें आप चाहे वो करो या नहीं करो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, सो देन आप एक प्रीमियम प्राइस डिमांड करना अपनी वो मुश्किल हो जाएगा, राइट? सो अपने आप को रिपोजिशन इस तरह करना है. एंड अभी आप टास्क एट हैंड आपके जो भी हैं आप कंप्लीट कर लो. आप अभी असाइनमेंट्स जो ले रहे हो करते रहो, ऐसा मैं डिनाई नहीं कर रहा. बट पैरेलली आपको इस चीज पे काम करना होगा. एंड धीरे धीरे उस मोड से बाहर आके एक ऐसे ऐसे अपने आप को पोजीशन करना होगा कि देन अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे ना ये स्टेज में, तो मार्केट या क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट या जो भी हो थर्ड पर्सन, वो किस तरह आपको वैल्यू कर पाएगा. So thus you have to define your value, who you are, what is your value, what service will you offer, to whom will you offer, and how and why, what makes you different to offer that service. अभी अपने डॉट जेपेग वाई फॉर्म में, क्योंकि वो एकदम क्लैरिटी के साथ आए हैं अभी मिस्टर बजेटिया जी के पास. बट ये सेशन में मैंने डेलिबरेटली, फन नहीं है ऐसा नहीं है, बट डेलिबरेटली मैंने थोड़ा सा एक इट विल बी अ जेंटल एंड a very I would try to have a conversation with you guys, and a very gentle conversation. And yes, a little humor is there, but still, because thoda serious topic hai. All right, so अब जब हम बात करते हैं डॉट जेपेग भाई की, उन्हें पता है कि उन्हें ई कॉमर्स बिजनेस में, मर्चेंडाइज एंड ई कॉमर्स बिजनेस में उनको फोकस करना है. एंड अब वो एकदम कॉन्फिडेंस, अलग लेवल कॉन्फिडेंस के साथ वापस आए हैं बजेटिया जी से डील करने. एंड बजेटिया जी भी अभी थोड़े बहुत कन्विंस्ड हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने, डॉट जेपेग भाई ने उन्हें बहुत मदद की है. जैसे आपने देखा प्रीवियस सेशन में उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया कि आप मुझे काम दो, आप मुझे काम दो टाइप्स, you never do that. So specialist is always, being a specialist will always be a greater than a generalist. So once you crack this, then आगे जितना conversation होगा वो valid है. All right, then asset set है, मतलब asset set है. So until unless your ass is set, you cannot fight this battleground. तो एसेट सेट है का मतलब है कि आपकी केस स्टडीज, जैसे मैं हमेशा एडवोकेट करता हूँ, विल बिकम योर मोर देन 50% ऑफ बिजनेस डेवलपर. क्योंकि उसमें जो प्रीमियमनेस, आपके प्रेजेंटेशन में जो प्रीमियमनेस, वो हम आगे के एपिसोड्स में और अच्छे से कवर करने वाले हैं. मैं आपको काफी टूल्स और रिसोर्सेज भी दूंगा जिससे आप वो बेटर कर पाओ. तो जितना आपका प्रेजेंटेशन स्ट्रांग होगा ना, आपकी केस स्टडी स्ट्रांग होगी, उतना चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि किसी को आपके साथ काम करने की इच्छा होगी. सो स्पेशलाइजेशन जब एसेट्स के साथ मिल जाएंगे, एसेट्स मतलब कि आपको अपने ब्रांड एसेट्स रेडी करने हैं. अपना खुद का सोशल मीडिया प्रेजेंस, अपनी खुद की वेबसाइट बहुत नेसेसरी है. इफ नॉट, एटलीस्ट अ बिहेंस हैंडल, एटलीस्ट some sort of a Google Drive, and उसके अंदर कुछ केस स्टडीज. बट बॉटम लाइन, केस स्टडीज एंड अ प्रोफाइल जिसको देख के किसी को भी थर्ड पर्सन को एक क्लियर कट आइडिया आ जाए कि दिस इज द स्टैंडर्ड एंड लेवल ऑफ वर्क दैट यू आर ऑफरिंग. अभी हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते रहते हैं, स्ट्रैटेजी बोलते रहते हैं, जब तक उन्हें वो एक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखेगा आपके प्रीवियस वर्क प्रोफाइल में या आपके प्रीवियस क्लाइंट्स के लिए आपने क्या किया है, तब तक उन्हें कोई ट्रस्ट फैक्टर नहीं आएगा आप पे. एंड बेस्ट केस सिनेरियो, जब आपका स्पेशलाइजेशन आपको क्लियर है, आप भी वो सेक्टर और मीडियम में केस स्टडीज ज्यादा बनाओगे ऑफ कोर्स. एंड अगर नहीं है तो मे बी यू स्टार्ट डूइंग प्रोबोनो वर्क यानी मे बी यू आर डूइंग इट बिकॉज यू नो दैट यू आर इन्वेस्टिंग your time energy with some pro bono clients. और pro bono मतलब जहाँ पे आपको पैसा मिल रहा है या नहीं भी मिल रहा है या कम मिल रहा है, you understand, but you know that 6 months मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे एसेट क्रिएशन में. क्योंकि एसेट क्रिएशन में टाइम इन्वेस्ट नहीं किया गया ना, तो वो डेली हमारा जो काम चलते रहता है, क्लाइंट का है, कुछ काम किया, डेडलाइन है, डिलीवरी दिया,
वो एक बस चलते रहेगा, ऐसे ही महीने के महीने निकलते जाएंगे, वीक्स के वीक्स निकलते जाएंगे, कभी हमारा ऐसा प्रोफाइल या ऐसे एसेट डेवलप नहीं कर पाएंगे कुछ. तो very first step that you might take is develop your assets, because no, you will need this to back your negotiation and conversation with the prospect or a client. Until unless you have this, only talking in air doesn't make sense, right? So let's get this straight, like कहाँ किस जॉनर में फोकस करना है, किस स्पेशलाइजेशन में फोकस करना है. देन गेट दिस स्ट्रेट कि ठीक है, नहीं है एसेट्स मेरे पास, चलो डेवलप करते हैं. एक केस स्टडी बनानी है, इन्वेस्ट योर टाइम, एनर्जी, मनी, रिसोर्स, द बेस्ट पॉसिबल यू हैव एट हैंड in developing case studies, and get that straight first. अच्छा, the brief that we work on, मिस्टर बजेटिया जी का जो ब्रीफ होगा, क्रैक तो कर ही रहे हैं अभी हमारे .jpeg भाई, तो हम उन्हें भी रियल टाइम ब्रीफ पे हम काम करने वाले हैं, and that also will act as a part of your case study, right? So at least you want to hands on develop one case study in this particular journey. So that's awesome. एंड जो लोग शायद अभी बहुत अर्ली स्टेज पे है, उनको कुछ नहीं तो जैसे एटलीस्ट मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने अभी डिजाइन पोर्टफोलियो भी अभी कुछ नहीं बनाया अपना, तो एटलीस्ट उतना डिजाइन पोर्टफोलियो आप डेवलप कर लो. देन जैसे मैं कहता हूँ, यू रीच आउट टू क्रिएटिव फ्रेटर्निटी, B2B, not direct clients, and see how you can contribute in some projects जिससे आप through collaboration वो case studies and develop कर पाओ. Because उसके बिना you go out and freelance and take direct work, you will have to accept what you get rather than you being very targeted that this is the industry I'm focused on, these are the set of clients I need, and I have the case studies ready with me. So get your vision straight थोड़ा सा. Then now this is all about pitching high ticket, but you don't have to pitch. That's the catch. So आपको सेल करना है बट सेल नहीं करना. अभी .jpeg भाई अब तक कन्वर्सेशन बरकरार रख पाए बजेटिया जी के साथ बिकॉज ही डिड नॉट, मतलब वो आए थे मेरे पास, सारा ज्ञान तो लेके गए एपिसोड 2 और 3 में. वो फर्स्ट सेशन में तो हवा टाइट हो गई बिकॉज why should I go ahead with you? सीधा एक क्वेश्चन आया and he did not have the answer कि क्यों उसी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, because तब थॉट क्लैरिटी नहीं थी, डिफरेंशिएशन फैक्टर क्रैक नहीं था, कुछ नहीं था. He went back to his drawing boards, he analyzed, now he is punching back with proper clarity, and clarity is power. So number one, don't sell. मतलब आपको उनको बेचना नहीं है. nobody will love सेल्समैन. मतलब कुछ आते हैं ऐसे कैसे डिजाइनर्स, मतलब मैं ये करता हूँ, मेरे ये सर्विसेज हैं, मैं इतने में इतना करके दूंगा, मैं ये फीचर्स दे दूंगा. nobody is interested, to be very honest. मतलब मैं भी आज जाऊंगा ना, सीनियर हो या जूनियर हो या मेरे से भी बड़े बाबू लोग हो, nobody is interested, no prospect is being interested in being sold. यार ये मेरे को बेच रहा है, राइट? सो वो वाइब नहीं आना चाहिए. if you recollect the previous session, it was all about how Jpeg Bhai was helping Bajetia in understanding and educating him के why, क्यों, मतलब what will be the cost अगर वो ये सब को इग्नोर करेगा तो टाटा नैनो वाला केस हो जाएगा. अगर फ्रीलांसर्स वर्सेस एजेंसी में उसने उसको थॉट क्लैरिटी लेके आई, मैं क्यों इन हाउस करूँ या आउटसोर्स करूँ, उसमें उसको थॉट क्लैरिटी लेके आई. तो जितना हो सके उतना एक प्रोस्पेक्ट को एजुकेट करना, कंसल्ट करना, उसके साथ एम्पथाइज करना, मतलब उसके शूज में रह के उसके प्रॉब्लम को समझना, राइट? सो यू डोंट come there and in any conversation the biggest killer will be the moment you start selling that. So hey, I have this UI UX video social media service and etc etc, so why don't you do this, why don't you do a website for this, मतलब without even
understanding where is he coming from or where is she coming from, what is her or his background like, उसकी क्या current situation है, क्या scenario है. So डॉट जेपेग भाई अंडरस्टूड कि ये बेचारा बजट तो टाइट है इसका, लेकिन इसको पता नहीं ना अभी कि इसको क्या वैल्यू मिलने वाली है, बिकॉज एक क्लाइंट्स को नहीं पता होता. क्लाइंट तो आके वही कहेगा कि अरे एक लोगो बना दो, इसके साथ एक लेटर हेड दे दो, एनवेलप दे दो. तो कहीं ना हमें एक स्टैंड लेना पड़ेगा. एंड अगेन नॉट एवरीवन इज योर क्लाइंट, यू हैव टू डिफाइन कि क्या मेरे लिए गुड क्लाइंट है, क्या मेरे लिए बैड क्लाइंट है. गुड क्लाइंट के ये पैरामीटर्स हैं जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को समझता है और उसकी तरह आपके पास आता है, ना कि के मतलब मैं सिर्फ आपसे एक ये लीफलेट डिजाइन करवाना चाहता हूँ, कर लो ठीक है, लेके जाओ लीफलेट डिजाइन करके. बट any good, and that will not be your right prospect or client. Any good client is a client who understands, and if not aware, after getting awareness will definitely understand and say yes, now I understand the end purpose of what I am doing, and मैं आपके साथ agree करता हूँ, and treats you as a partner. By partner I mean the not a vendor or a some kind of, मतलब ऐसे ही हाँ कोई vendor हो तुम उनके लिए. एनी कम्युनिकेशन, आप उनके कम्युनिकेशन की चीज को इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो, सो दे विल ट्रीट यू एज अ पार्टनर इन देयर जर्नी. अनलाइक कि हाँ कोई आप थोड़ी कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हो उनके लिए. सो आप उनके एक बड़े बिजनेस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हो. सो यू बिगिन विथ talking to them and understanding their current scenario and situation, कि where are they right now and where do they want to reach, उनकी क्या गोल्स है उनके, आपके प्रोस्पेक्ट्स के. यू नो we even I learned this through experts when I was in the on the client side. I learned when I was on the client side, rather, when I was not using all these techniques, and once I realized, I started using these techniques and I did get results, and hence was able to build an amount of portfolio, clientele, I mean the credentials, as well as the people referral. The work that we got via referrals was insane. Matlab, never in our life we went on to those platforms. the I'm not naming the platforms, but again I say the platforms is not the problem. It depends, like it's all about the network being built there, how are people really treating that platform. Anyways, so never in life, it was always through right approach, which we are discussing right now, we were able to bag some deals. And after, it's all about closing, right? So अभी जो हम सीख रहे हैं ना, ये closures कैसे करेंगे हम, and closures आप ही कर पाओगे. मतलब आपको आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आके ये कन्वर्सेशन जो हो रहा है उसके डेप्थ में जाके चीज़ों को समझना पड़ेगा एंड खुद को अपस्किल करना पड़ेगा वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन में. अगर ये नहीं कर पाएंगे हम, तो nobody else can close a client for you. You have chosen this path of being an independent freelancer or an agency, or you might be someone who, but ultimately you want a client. So in order to get a client, you need to understand the art of communicating and closing. So some thumb rules which we are discussing here will 100% help you right away. जैसे ही आप ये complete कर लोगे, the very next day you will start and applying this in your conversations when you get some call, or if you are approaching somebody, and see the change in the person's behavior. सामने वाले का reaction में change देखो आप, compared to what we are doing right now, right? So referrals, क्यों referrals? Because everybody started referring us because उनको एक तो पता था डिफरेंशिएशन मिलता है इनके पास दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड व्हेन इट कम्स टू स्ट्रैटेजी एंड डिजाइन. वो भी हम लोग एक स्पेसिफिक मार्केट पे फोकस कर रहे हैं. प्लस हम लोग मतलब बेचते नहीं हैं उनको, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं और हमेशा चाहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हम राइट पार्टनर हैं कि नहीं. हम खुद को भी इवेल्युएट करते हैं कि मतलब मैं क्या इसकी जेन्युइनली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा, या अगर इसका कोई चीज आता है कि यार ये मुझे कुछ
कैरेक्टर एनिमेशन वाली 2D एनिमेटेड वीडियो चाहिए, then we be like okay, so identity strategy सारा एक assets में रेडी करके हम देंगे, then complete design language हो जाएगी, tonality हो जाएगी, सेम आपके एक्सप्लेनर वीडियो में कंटिन्यू होगी. बट सर मतलब एक्सपर्टीज हमारी 2D एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियो में इतनी नहीं है जितनी हमारी आइडेंटिटी सिस्टम्स एंड डिजाइन एंड स्ट्रैटेजी में है. बट आई डू हैव अ गुड चैनल पार्टनर विद अस. आई वुड हाईली रिकमेंड हिम और हर, एंड हम मिलके कोलैबोरेट करके आपको एक पूरा प्रोडक्ट आउटपुट देंगे. बट दे आर द राइट एक्सपर्ट्स, सो यू रियली केयर फॉर, you know, as a human to human I'm talking to you right now, so you really care for that particular prospect. Either you provide them service, either you don't provide them service, another thing, but at least you start empathizing with the inbound leads that you get, or if you are reaching out to someone, and being very honest and genuine about whatever you might say them, you know, be very honest and genuine. So start as a specialist, check if your assets are set, your credentials, your company profile, your own profile, your social media presence, your case studies in that particular domain. Set those things up. Stop selling. Don't start any conversation with what you have to offer in terms of services. That's very salesmanish. So don't do that at all. मतलब पूरा दिन आज तो सोशल मीडिया पे भी जा रहे हैं, वो तो हम भी करते हैं, बट सोशल मीडिया पे भी जा रहे हैं तो रोज कोई ना कोई कुछ तो बेच ही रहा है हमें. बट तो या तो स्पॉन्सर्ड एड्स आ गई उसके, जैसे मैं भी हूँ उसमें से, बट बेच रहे हैं मतलब अभी वो वी कैन, हाउ कैन वी रीच आउट टू ऑडियंस देन. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट digital marketing or targeted marketing. Here by selling I mean in the conversations you never tell oh this is the service I have to offer. Even if you saw me selling something online, um, I was not selling, okay, so the courses are lifetime access, it has, etc. I'm not talking features here. You have, you can learn at your own time, energy, and space. So all that is fine. What I have to, which problem I can solve for you. So you are maybe designing a visiting card today. How I can help you understand that there is a bigger world out there, and you have that potential already because you are a creative soul. You know you are a creative person. You have that talent in you. It's just that you are not exposed maybe to that bigger world which we can really be into. Let me take you there, and then it's your call how you want to transform yourself to there, right? So I was not talking some uh, this is the feature of the core, etc. etc. मतलब फीचर्स की बातें मत करो. आप सामने वाले की क्या उसके जो गोल्स हैं वो समझो. आस्क, मतलब उनके जो गोल्स हैं वो एम्पथाइज करो उनके साथ थोड़ा सा. आई होप मतलब ये मैं थोड़ा टोन चेंज हो गया होगा ये सेशन में, बट दैट्स द ग्रेविटी ऑफ इट. सो thus, yeah, so empathize, and then any given day conversation is equal to conversion. मतलब and आप मतलब चाहे किसी को, वो पता है मार्केटिंग वाले होते हैं, डेमो दिखा लेते हैं, प्रेजेंटेशंस कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं वो, बट अगर डील क्लोज नहीं होगी तो वो सब करके भी मतलब क्या, मतलब आप गए एक प्रोस्पेक्ट के पास, सारा कुछ हुआ बट क्लोज नहीं हुआ. क्लोज डील क्लोज करने के लिए एक ह्यूमन टू ह्यूमन कन्वर्जेशन का बहुत रिक्वायरमेंट है, खास करके when you are not talking 1,000 2,000 rupees or 1,000 5,000 rupees, when you are talking some decent amount of an investment, 50,000, 1 lakh 75,000, 1 lakh 50,000, 2 lakh, you know. So conversation, human to human conversation के बिना वो possible नहीं है, is what I believe, and everybody else believes, and they are also doing the same. So without having a genuine conversation, of course now virtually because of the current scenario we understand, but be it offline, be it online, somebody will need to talk to you and understand a lot of parameters before they really buy in with your
offering that you have. By offering, I mean the service. I don't mean the. You understood now. I'm not talking. You don't have to be the salesman or the sales woman. So by conversation, what I'm trying to say here is, now when you, I was being, I will uh, a quick real time आधारित पे ये एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ. तो इट इज रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग. सो अभी मेरी, मैं जिस जर्न इट्स इट्स अबाउट 2 years before, and a very senior digital marketing executive came to my office to meet me. It was for some other requirement, किसी दूसरे client की requirement थी. तो मेरी तब आदत थी ऐसे लोगों से डील करने की, जो आदत, जिनकी आदत थी सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, कुछ क्लाइंट का काम किया है वो दिखाते हैं. आर यू गेटिंग? कुछ क्रेडेंशियल्स दिखा लेते हैं अपने क्रेडेंशियल्स, यानी उन किस किस क्लाइंट के लिए काम किया है, क्या उनका मतलब कुछ कुछ कंपनी का उनका डेक होगा वो पूरा दिखा देते हैं. तो मेरी आदत थी, ऐसे लोग आते थे वो सब प्रेजेंटेशन देते थे, ऐसा सब होता था. अ वेरी जेन्युइन गाय केम टू ऑफिस, ना प्रेजेंटेशन ना क्रेडेंशियल्स ये वो. ऑफ कोर्स उसके वेबसाइट पे वो सब था, मतलब सीधा जेन्युइन कन्वर्सेशन किया उसने, एकदम वो कन्वर्सेशन कैसे किया वो मैं आगे और एक्सप्लेन करता हूँ. बट एक जेन्युइन मेरे साथ कन्वर्सेशन किया कि पहले तो मुझे जानने की कोशिश की उसने, अपने आप को एक आइस ब्रेकिंग लेके आया. पहले थोड़ा सा, पहले खुद उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, वो कौन है, वेयर डज ही कम फ्रॉम, दिस इज द सीनियर बैकग्राउंड आई कम फ्रॉम, दिस आर द एक्स, दिस इज लाइक आई एम एक्स सो एंड सो, आई वर्क फॉर XYZ क्लाइंट्स, वर्बली बोल दिया. एंड दिस इज द रिजल्ट वी रिसेंटली डिड फॉर दिस क्लाइंट. तो वो भी एक्चुअल बताया कि ये इम्पैक्ट हमने अभी रिसेंटली 2 months पहले इनके लिए किया. एंड नाउ प्लीज टेल मी लाइक हाउ एंड वेयर आई कैन फिल द गैप फॉर यू और हेल्प यू आउट. तो एक ऐसा मेरे को जेन्युइनिटी आया, मेरे को भी मजा आया कि अरे जो ये बंदे ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ मेरे साथ अभी बात की, and just where does it, like I know now where he comes from, and a level of respect aa gayi. And then I started having the conversation with them. And when you don't have those fancy presentations on table and unnecessary stuff on the table, matlab packages ye wo, all you are left with is a genuine conversation जो आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ करते हो. और वो कन्वर्सेशन ही डिसाइड करेगा कि आपका जो पिच है वो उसके माइंड में कितना फिट बैठा है या नहीं बैठा है. बाकी सब टाइम पास है, मतलब बाकी सब टू एंड फ्रो है. वो आप कुछ पीपीटी भेजोगे वो देखेगा, आप कुछ फिर डॉक्यूमेंट बना के भेजोगे पैकेज वो सब देखेगा. उससे कुछ खास मतलब नहीं निकल के आएगा. इज व्हाट वी हैव बीन सीइंग इन द इंडस्ट्री. वी हैव सीन genuine conversations have led to final closures and conversions, and genuine conversations between owner to the prospect. मतलब आप जो ओनर हो या आप खुद जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह उनसे बात करोगे, that will help them to understand your confidence level. How are you talking by being in their shoes कि हाँ I understand, I very well know कि ये आपका करंट सिनेरियो है, प्रोडक्ट है, ओके अभी आई गेस सर इफ आई वाज इन योर प्लेस मैं इसको ऐसे करता या वैसे करता. तो आप थोड़ा सा एडवाइजेस नहीं दोगे, मतलब आपको एडवाइजेस नहीं देनी उनको. यू जस्ट हैव टू स्टार्ट डायगोनाइजिंग. मतलब इफ यू आर रियली अ प्रैक्टिशनर, आप अगर एक प्रैक्टिस अभी कर रहे हो जैसे वी आर प्रैक्टिसिंग राइट नाउ, we always go to a prospect and diagnose their problem कि उन लोग की क्या करंट सिनेरियो है. जैसे हमने मिस्टर बजेटिया जी का किया, डॉट जेपेग भाई वैसे सॉर्टेड है बंदा, खाली उसको कुछ थॉट क्लैरिटी की जरूरत थी. तो उसने बराबर डायग्नाइज किया कि अरे यार ये इवोक प्रिंट्स करके ये कुछ चला रहा है B2B सर्विस, इवोक स्टोर करके कुछ चला रहा है और एक B2C टी शर्ट्स बेच रहा है. उसने देखा एक तो यार ये दोनों के ऐसे क्यों नाम सेम रख दिए इसने, क्योंकि ब्रांड एक ब्रांड होता है. मतलब ऐसा कभी सुना है क्या मतलब
नाइकी का कोई B2B सर्विस हो जो दूसरे को कुछ प्रिंटिंग करके देता हो. तो कंज्यूमर ब्रांड इज अ कंज्यूमर ब्रांड. उसकी एक अलग आइडेंटिटी, डिफरेंशिएशन, रिस्पेक्ट होती है. एंड सर्विस इज अ सर्विस. मैं सर्विस को डिनाई नहीं कर रहा, बट सर्विस इज अ डिफरेंट ट्रीटमेंट. तो एक तो उसने जो यूनिफाइड अप दोनों को जो सेम दे दिया था ना, वो थोड़ा कहीं ना कहीं सही नहीं जा रहा था. राइट. आपने ये भी देखा होगा जैसे कि वो आजियो करके पोर्टल है. सो आजियो थोड़ा एक डिफरेंट यूनिकली नेम किया गया है क्योंकि वो किसी दूसरे पर्पस के लिए, दो इट कम्स फ्रॉम द पेरेंट कंपनी विच इज रिलायंस. दैट इज अ डिफरेंट कन्वर्सेशन. आई एम नॉट टॉकिंग the company structuring and corporates here. I'm trying to tell is कि डॉट जेपेग भाई ने ये डायग्नोसिस बराबर कर ली कि ये दोनों इसकी जो करंट प्रॉब्लम है, ये एक तो ब्रांड लेवल की प्रॉब्लम है, और उसने बराबर सामने उसको बजटिया जी को बोला भी कि ये पूरा रीब्रांड करना पड़ेगा, इसको एक अलग आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, इसको एक अलग आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, प्लस नैरो डाउन करना पड़ेगा. इसमें आप किस पर्टिकुलर चीज और आपकी यूएसपी सर्विस में भी डिफाइन करनी पड़ेगी. आपकी यूएसपी या नैरो डाउन करके आपको आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी डिफाइन करनी पड़ेगी. राइट. Now, if there are, I mean, businessmen in the room, the entrepreneurs in the room, even you can judge someone by seeing this कि क्या वो specialist है. tick कि हाँ अगर वो specialist है तो that is the best person for your business that you want to get done from them. Assets उसके पास खुद के उसकी कुछ, is he demonstrating something, मतलब what demonstrate was a LinkedIn का preset template, demonstrated history of working in so and so. Anyways, so does he have that demonstrated work backing him? Then क्या वो बेच रहा है आपको, मतलब विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग के आपकी क्या करंट पोजीशन है, क्या सिनेरियो है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, वो बिना एम्पथाइज के आपको बेचते जा रहा है, बेचते जा रही है. देन यू नीड टू टेक अ पॉज, मतलब देन यू स्टॉप दैट कन्वर्सेशन. फिर आप नो सी हाफ ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन, मतलब ऑफलाइन मीटिंग हो या वर्चुअल जूम मीटिंग हो, द मोमेंट यू ओपन अ पीपीटी, यू 15 मिनट आप पूरा, वो सामने वाला पता नहीं, मतलब वो इतना पूरा 15 मिनट सुना भी उसने नहीं सुना, बिकॉज हियर यू आर, आपका कुछ प्रेजेंटेशन अगर आप दिखा रहे हो तो, मतलब मैं उस प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, ये आइडिया वाली पिच नहीं है, ये वो पिच हो, ये आप मीटिंग करते हो तो पता है कुछ प्रेजेंटेशन दिखाते हो अपने काम की, मैंने ये काम किया है, मैंने वो किया है, मैं ये हूँ वो हूँ. तो मैं नहीं सुनना उसको उसको वो तुरंत कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ. सो हे दिस इज मी, मैंने ये किया, लाइक so a quick background, like, so hey Mr. Bajetia, this is Jpeg Bhau. I've been working with, prominent startups to, prominent brand, I mean promising startups to prominent brands, and e-commerce mein maine ye recent, like it's been 6 months, we like 2 months before, just a month before I completed this project for ABC e-commerce company, and this was the impact and output that we gave them. एंड वही मैं पहले आपका दिक्कत समझना चाहता हूँ कि वेयर यू आर राइट नाउ, आपकी करंट पोजीशन क्या है, एंड थ्रू माय एक्सपर्टीज इन ब्रांडिंग एंड डिफरेंशिएशन फॉर योर ई कॉमर्स सेक्टर, मैं बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा. सो लेट्स बिगिन. लाइक आई वुड लव टू नो मोर अबाउट वेयर कैन आई हेल्प यू एंड हाउ कैन आई फिट in your what more I can, and where I can add value to you rather than you blabbering that credentials. वो सब तो मीटिंग के पहले ही एक अपने को अपना एसेट सेट है ना, तो एसेट सेट है तो क्या करने का, मीटिंग के पहले ही you can mail them, like when you schedule a meeting you can mail all your work, website credentials. He can see that, man, मतलब he or she can see that. ठीक है, the meeting should be a purposeful meeting जिसमें कन्वर्जेशन हो, इंटेंस कन्वर्जेशन हो, जिस तरह अभी हम एक इंटेंस सीरियस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कन्वर्जेशन हो जिसमें आप गोल सेट कर लो कि आज हम जो मिले हैं, मैं चाहूंगा कि दिस विल बी द बेस्ट 15 मिनट ऑफ योर लाइफ और बेस्ट 30 मिनट ऑफ योर लाइफ, जिसमें आपकी क्या दिक्कत है क्या नहीं मैं समझूंगा या समझूंगी, एंड आई मेक श्योर कि कुछ तो आज आपको मैं वैल्यूएबल, जहाँ तक मेरी पर्सनल कैपेसिटी मेरी एक्सपर्टीज परमिट करती है, आई मेक श्योर कि मैं कहाँ आपको हेल्प कर पाऊँ. सो यू हेल्प समवन, यू डोंट सेल
someone. Thus, mission statement also talks like I help D2C entrepreneurs, transform their business and so on. So you help. So somebody, I help graphic designers transform them to brand designers and blah. So somehow you need to have and strike conversation. And ये अगर आपको लग रहा है कि आप इंट्रोवर्ट हो, अरे आप बातें ज़्यादा नहीं करते हो, तो गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, बिकॉज उसके बिना तो नहीं होगा. एंड upskill, man, upskill. You don't rely on third party services for this, so you need to upskill, and uske bina you cannot close the deal. So conversation is equal to conversion. Then diagnosis before prescription. Half of the times हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सेल्स करते हैं ना, अरे सोशल मीडिया भी कर लो ना यार, अरे वेबसाइट चेंज कर लो, बढ़िया बनाते हैं. तो ये सब थोड़ा it feels that you are prescribing something without even understanding or going deep into what the business is actually doing right now, right? So you diagnose by asking questions. Simple. We already know now. We know that who is your consumer. How do you like? What is the competition scenario like? क्या दिक्कत आ रही है? What is the goal? What is the goal that you want to achieve? What will make you feel? So you throw such questions which will make them also tickle their brain a little. Okay. Okay. So very first, what makes you talk to me? Because क्या वो आपकी मेन पे प्रॉब्लम है? तो जैसे बजटिया ने कहा कि यार अभी ऑफलाइन था, सब दिक्कत हो गई, अभी ऑनलाइन आना है यार, ऑनलाइन आना है, तो it's not working out for me, the current situation. Like, can you help me out? मतलब क्या आप मदद कर पाओगे मेरी? like, see, this is the brand, evoke store, evoke prints, कैसे करूँ, क्या करें? तो तब आपको दिखेगा कि ओ ये सिचुएशन है, तो अभी मैं कैसे इसको आंसर करूँ. Then you throw such questions. What is the goal of we meeting? What will make you feel yes, this meeting is successful because you got to know, you got answers to some of your queries. So what are those queries like? Where do you want to take this ahead? कहाँ लेके जाना है? आप क्यों ये सब कर रहे हो? So try to, in that conversation, be a very good listener. Talk less, don't blabber, because anytime when you pitch, when you if you are closing a high ticket thing, you have to somewhere be you have to observe, you have to be good with interpretation skills. वो सामने क्या बोल रहा है उसको interpret करके सही उसको prescription देना as per their current problem, and it may change from prospect to prospect. And you can achieve this by asking and throwing right questions that will make them tell you what you want to know from them. So put questions in front of them. So Mr. Budgetia, like, what do you think? Like, what is your current scenario like, Mr. Budgetia? Where do you wanna Abijo? Like, are you fully committed to this? Pura rebranding में it's a process, it's a commitment. So ऐसे आपको काफी अच्छे कन्वर्सेशंस और सीरियस क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. बाकी सब वो जो आपका अगर ये फर्स्ट मीटिंग में क्या होता है, पीपल हैव ऑलवेज आस्क्ड मी. सो व्हेन यू आर रियली क्लोजिंग अ क्लाइंट इन द फर्स्ट मीटिंग, it takes maybe couple of more meeting or sometimes a decent amount of one or two conversation लगेंगे, और शायद और एक लग जाए, it's okay. But when you are closing someone, you need to step into their shoes, ask them questions, right questions that will be relevant to their business, and then prescribe them. I guess ये हमें करना चाहिए जिससे आपका एक turn around आएगा. Like Budgetia ji, I believe both of them are serving in different, though you are ultimately it's a t-shirt, but I guess a B2C brand is a B2C brand. Let's treat it like that. And वो दोनों को same नाम नहीं देते हैं, तो दोनों का नाम थोड़ा change करना पड़ेगा. This will have name a different name, say name A, and this will have name B. We will think on that. Both will have a different positioning altogether, and somehow it will not go like. So we first have to rebrand what is in the plate right now. We cannot carry forward with your current identity. So
and you have to justify why you are telling that, because I believe, and then you somewhere have to narrow down. Can we take the decisions from data? Do you have the database? Like आपने जो इतने 2-3 साल में ऑफलाइन सेल्स किया, उसमें डेटाबेस तो होगा, व्हाट प्रोडक्ट वेंट रियली वेरी वेल इन द मार्केट, दो ऑफलाइन, बट कौन सा प्रोडक्ट बहुत मजा आया पब्लिक को, कौन सा पब्लिक ने रिवर्ट ही नहीं किया उस प्रोडक्ट पे। अगर आप ये जो B2B सर्विस दे रहे हो, तो उसमें ऐसा कुछ है कि ऐसा क्या आपको लगा, मार्केट में क्या दिक्कत दिखी आपको, कि जब आप बोलते हो उन्हें कि आई प्रोवाइड टी शर्ट प्रिंटिंग सर्विसेज एंड आई चार्ज मे बी like for example I print collar t-shirts for ₹350 per piece and minimum आपको 100 पीस कराना, 200 पीस तो कराना पड़ेगा कॉलर में। तो पब्लिक बोलती, जैसे बजट या आंसर दे रहा है, पब्लिक बोलती थी कि यार इतना, अगर ये, मुझे तो खाली यार 70 पीस चाहिए, आप 300 पीस मेरे से करवा रहे हो, तो ये तो मतलब 200 पीस करवा रहे हो, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी MOQ। तो यार जेपेक भाई, मैंने देखा है कि ये MOQ बहुत तकलीफ दे रहा है क्लाइंट को। या राउंड नेक टी शर्ट चाहिए किसी को, प्रिंटिंग करनी है, तो मैं बोल देता हूँ कि इतना पीस होगा तो मतलब इतना मिनिमम 100 पीसेस होंगे तो हम कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। तो अभी इसमें MOQ थोड़ा दिक्कत दे रहा था क्लाइंट को। फिर मैंने देखा है कुछ ऑनलाइन स्टोर्स को मैं सप्लाई करता हूँ, जैसे मैं खुद तो ऑनलाइन बेचता हूँ लेकिन मैं सप्लाई भी करता हूँ, तो उसमें भी ऑनलाइन स्टोर वालों को इन्वेंट्री का बहुत दिक्कत आ रहा है, बहुत नड़ती है उनको इन्वेंट्री। कुछ कभी कभार उनको जजमेंट नहीं आता तो ज़्यादा प्रिंट करा के ले लेते हैं मेरे से, फिर उनका दूसरा कुछ रिकरिंग ऑर्डर ही नहीं आता, उनका वही माल नहीं निकला होता है। तो ऐसे ही विल स्टार्ट आंसरिंग सम बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड बिजनेस यू नो, कि ठीक है इन्वेंट्री की दिक्कत आ रही है, MOQ की दिक्कत आ रही है, देन कंज्यूमर में उसको भी मजा आएगा कि ठीक है मुझे भी डेटा एनालाइज करना पड़ेगा, बिकॉज बेस्ट डिसीजंस आर टेकन थ्रू डेटा नॉट इमोशंस। सो डेटा एनालाइज करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट उनका जो रिटेल में बिक रहा था ज्यादा, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, तो उसको हम फोकस करें। तो डॉट JPEG भाई स्टार्टेड डायग्नाइजिंग एंड देन प्रिस्क्राइबिंग by asking such business questions. Are you getting the scenario building which we are trying to do here? So this is how experts deal. They don't blabber, they don't show, they don't talk about themselves. They talk about the prospect, they care for the prospect, and they talk their language, they be in their shoes, so that the ice breaks and comfort zone comes, and also trust starts building. उसके बिना ये बिल्डअप अगर नहीं होगा, यहाँ तक हमने बिल्डअप नहीं किया अगर कन्वर्सेशन, तो फिर दिक्कत आएगी आगे प्राइस मांगने में, राइट? सो देन गेट पेड। नाउ बिफोर गोइंग लाइक बहुत आगे इन द कन्वर्सेशन, व्हेन यू आर हैविंग विद द प्रोस्पेक्ट, you don't solve problems for free, because if you start doing that, if you don't value your thinking, आप जो दिमाग उनको दे रहे हो, your time, your energy, your prospects won't value that. So you have to empathize, you have to ignite a conversation, diagnosis भी करो। अभी डायग्नोसिस मतलब ऐसी डायग्नोसिस नहीं, अभी जैसे कुछ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, तो उनको अगर मेरा काम लेना है फॉर एग्जांपल, तो उनको मेरा शायद एड मैनेजर देखना पड़ेगा, मेरे अकाउंट्स में जाना पड़ेगा, मतलब मेरे फेसबुक अकाउंट में जाके बैकएंड चेक करना पड़ेगा, कुछ डेटा चेक करना पड़ेगा, तो उन लोग मुझे प्रिस्क्रिप्शन दे पाएंगे। कुछ लोगों को वो इन डेप्थ जाके करना पड़ता है, तो लेकिन उतना इन डेप्थ जाने से पहले पीपल ऑल्सो चार्ज फॉर बीइंग इन डेप्थ, कि सिर्फ अगर आपको एक इतनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कंसल्टिंग चाहिए एंड ऑडिट करके चाहिए, तो आई विल चार्ज दिस अमाउंट एंड आई विल डू इट फॉर यू। सो रेदर देन व्हेन यू मीट सम, नाउ टेक अ केस व्हेन यू मीट अ प्रोस्पेक्ट, आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते हो, सब बातें होती हैं, मतलब ऐसे बातें होती हैं, वो मतलब ये सब कुछ होता ही नहीं है, आधा टाइम तो कुछ बातें होती हैं यहाँ वहाँ की, वो उसकी दुख भरी कहानी सुनाएगा, आप अपनी थोड़ा बहुत सुना लोगे यहाँ वहाँ के रेफरेंसेस, फिर बोले आप भेजो, आपका प्रपोजल भेजो, मुझे मेल करो, प्रेजेंटेशन आपकी तो देखी सब बढ़िया है, अभी प्रपोजल भेजो, देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो ये कुछ कंस्ट्रक्टिव सच नहीं हुआ अभी, वो प्रपोजल भी देख के वो मतलब आपको ये प्रेजेंटेशंस और प्रपोजल्स को थोड़ा सा रिप्लेस करके कन्वर्सेशंस में आना पड़ेगा, और प्रेस्क्रिप्शंस में आना पड़ेगा, और क्वेश्चंस में आना पड़ेगा, टू रियली
be in a position to close a client in a proper format. And ये रूप या रंग आपका किसी ने शायद आज तक देखा ही नहीं है या अभी देखने वाला है, या अगर आप कर रहे हो तो कुछ लोग कर रहे होंगे तो मे बी इसमें से कुछ और एड-ऑन्स मिल जाए उन लोगों को, यू नेवर नो. सो and then get paid, मतलब then you have to draw a boundary also. You cannot get मतलब in depth, right? Because आपको तो मजा आ रहा है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने को, उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सब आप दे दोगे, बट देन यू ड्रॉ लाइन कि, एंड ये जितना अर्ली हो ना कन्वर्जेशन में उतना अच्छा है कि कैन यू अफोर्ड मी. सो डॉट जेपेग भाई अभी एकदम अलग लेवल के हाई रेजोल्यूशन में है, वो एकदम हाई रेजोल्यूशन में है अभी, वो फुल हाई हो गया है. तो कैन यू अफोर्ड मी इन द सेंस this becomes like it depends, matlab it depends like how are you having the conversation, but by can you afford me I mean that you know earlier the better. So dekho matlab dot jpeg by will be like Mr. Budgetia, see I am not that person who does maybe आपको लगता रहेगा अरे एक लोगों का 2,000 रुपया तो दो लोगों में तो 4,000 रुपया हो जाएगा, and then something like that. So I am not that guy. I am a brand designer, I am a business guy. आपका पूरा मेरा दिमाग, स्ट्रैटेजी, टाइम, एनर्जी, रिसोर्स काफी कुछ जाएगा एंड देन इन्वेस्ट होगा. बट देन सी मैं अल्टीमेटली ये नहीं कह रहा कि आपको ये सब भी जताना है, डोंट डू दैट, नेवर. यू नो आप अपना वो सब मत ये सब सुनाओ कि टाइम, एनर्जी, रिसोर्स जाएगा टाइप्स. बट डॉट जेपेग भाई विल क्लियरली से दैट मैं एक बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, मैं वो सॉल्व करने में आपको हेल्प करूंगा, और उसकी वैल्यू आप ही बताओ फिर कितनी होनी चाहिए. क्या वो 1,000-2,000 रुपए होनी चाहिए? मतलब आप ही अपने बिजनेस को क्या इतना वैल्यू करोगे अगर आपको इतना कुछ मिल रहा है मेरी तरफ से? तो सो यू गेट देम, नो, let it come from their mouth. You don't, and never, and be gentle, be polite, don't push, you know, be very comfortable in your, make him comfortable, you be comfortable, don't be pushy, and never ever be frustrated or tired. यार अरे यार मेरा तो इतना ही सर टाइम एनर्जी मगज मारी जाएगा टाइप्स. You don't be that, you don't show that on your face and don't talk like that. So dot jpeg bhai will be like, if you already have something in your mind and you want to get done, and if you feel that you are yourself only capable to do all that, then I guess you need some fresh graduate who, जिसको आप बोल दो, या you go to some platforms which you know, तो वहाँ पे आप करवा लो ये सब. मैं नहीं कर पाऊंगा सर, अगर मैं करूंगा ना तो I'll bring ये वैल्यू ऑन टेबल, एंड मेरी ये पूरी एक्सरसाइज है, मैं ये पूरी एक्सरसाइज के साथ तो ही मैं आपको भी जस्टिस दे पाऊंगा, नहीं तो मुझे भी मजा नहीं आएगा कि मैंने आपको जस्टिस नहीं दिया, मतलब मैं वो काम ही नहीं कर पाऊंगा ऐसा. सो this again happened with me when I asked someone that like okay, so you're offering me so and so package when I became the client on my client side. Okay, content creation is something which I can manage. I'm a creative guy, I'll manage the organic content, everything. You just tell me the performance marketing fees now. And he said, no, yeah, we have this complete package, like this is tailor made, and this is tailor made for you. We understand that you can provide some designs and content creation, but then that will lead to another to and fro, back and forth sub ho jayega. And we know what sort of organic content we need to really push you in the market. So why don't you trust our process, trust what we say, and you know, let's do this together. So तो मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब मैं सिर्फ उसमें उसकी में से थोड़ा कुछ ऐसे मांग रहा हूँ तो वो भी he is sticking to his commitment कि नहीं, this is what will be, he made a tailor made that stuff for me. So you don't be like के हाँ ठीक है अगर आपको इसमें so प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम खुद ही बहुत सरेंडरिंग नेचर और उसमें बातें करते हैं प्रोस्पेक्ट्स के साथ, तो यू डोंट, मतलब कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है आप पे, आप सरेंडरिंग नेचर से ऐसे मत कम्युनिकेट करो. बी योरसेल्फ, बी चिल्ड काम कूल, मेक हिम चिल काम कूल, एंड ये क्लियर कर लो पहले, मतलब what budgets are you looking forward to, and of course they won't have any, sometimes they'll be like ठीक है I have so and so budgets allocated for this work. Sometimes they'll be like, when you propose me I'll get a better idea के मुझे I have never done this before, so when you propose me I'll get a better idea कि कितना मुझे इसमें invest करना पड़ेगा या क्या है.
सो अर्लियर द बेटर। ये सब ना जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हो ना, ये सब जब आपका थोड़ा बहुत डायग्नोसिस हुआ, थोड़ा आपने अपनी एक्सपर्टीज दिखा दी, थोड़ा आपने अपने क्रेडेंशियल्स वर्बली बता दिए कि मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है, आप ये आइस ब्रेक पहले ही कर लो कि उसका क्या कितना वो मतलब एफर्ट कर पाएगा या कितना एफर्ट नहीं कर पाएगा। एंड अगर उसका माइंडसेट क्या है, these days people clearly communicate कि do you have that growth mindset or do you have that मतलब investment mindset, तो accordingly हम आगे फिर बात करें या आगे प्लान्स बनाए, क्योंकि करने को तो बहुत कुछ है आपको। करने को तो अनलिमिटेड कितना कुछ कर सकते हैं, बट समवेयर आप भी अगर अपना कुछ मुझे बताओगे, मैं आपको कुछ अगर कम्युनिकेट करते हैं, तो थोड़ा प्राइसिंग लेवल पे अभी बात हो जाएगी, तो आगे फिर बढ़ने में उतनी आसानी होगी। देन ठीक है, तो अभी कन्वर्सेशन बढ़ रहा है आगे कि अभी बजेटिया जी नोस के जेपेग भाई इज द गाय एंड ही अंडरस्टैंड्स थिंग्स। इसने मुझे काफी हैंड होल्ड भी किया है अब तक, एंड जो ये प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है थोड़ा वो सही भी दे रहा है कि यस कि मुझे रिब्रांडिंग करनी पड़ेगी, यूएसपीज डिफाइन करनी पड़ेगी, मुझे खुद को समझना पड़ेगा डेटा, वो भी मुझे हेल्प करेगा कि कैसे क्या कम्युनिकेशन क्राफ्ट करना चाहिए। तो मैं खाली एक लोगो बना दूंगा कहीं से कुछ जाके, तो दैट विल नॉट हेल्प मी सेल ऑनलाइन। तो पूरा कम्युनिकेशन क्लैरिटी काफी कुछ मुझे हेल्प कर रहा है जेपेग भाई। एंड इसका क्या बजटिंग कैसे किया जाए, तो अभी ये सब कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ड्रॉप द बॉम्ब, अभी ड्रॉप द बॉम्ब यानी व्हेन अभी यू यू हैव टू इनिशिएट। हाफ ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, वी आर गुड विद, चलो प्रिस्क्रिप्शन भी हम लोग बढ़िया कर लेते हैं, बट जब पैसे की बात आती है ना, मे बी आवर बैकग्राउंड, मे बी आवर अपब्रिंगिंग, मे बी आवर कल्चर, मे बी हम लोग आज तक इतना कम्युनिकेट नहीं किया है, हम लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं जब भी पैसों की बात आती है कम्युनिकेट करने में। तो एंड एनी यू विल लूज रिस्पेक्ट इन द मीटिंग अगर वो आपकी तरफ से इनिशिएशन नहीं आ रहा है तो, बिकॉज सी अल्टीमेटली you are a brand designer or the creative agency or someone providing that service, you have to initiate that, okay, this is roughly like this is what I'm looking forward to, that will this will be a lucrative deal investment for you too, plus it will be motivating for me also to take up this project and dedicate my time and valuable time and resources on this, so that will make me put me in a comfortable position to take up this project. So this is how you have a very candid, natural, easy, calm conversation with any particular prospect. So drop the bomb in the sense, okay, Mr. Bajetia, I guess considering all um, the considering all the diagnosis, like considering all the discussions that we had and seeing the current scenario, I believe it is not, it will be roughly around 2.5 lakh to 3.5 lakh, like it's like that, yeah. So यू डोंट एक आप एक ब्रैकेट्स कम्युनिकेट करते हो, इसमें हिचकिचाते भी नहीं है, यू हैव टू बी वेरी कूल विद सेइंग 5,000 also with ease and 5 lakh also with ease. So bring that emotion out from your body or somehow when you talk numbers or price. So drop the bomb, एक बार उसको बोल दो कि ये है, इतने ब्रैकेट्स में हम लोग अगर चालू करेंगे तो कुछ हम लोग भी डिलीवर कर पाएंगे। बाकी अगर आप एक्सपेक्ट ही हमसे वो कर रहे हो कि हम वो 2,500 5,000 वाले हैं, तो सर मतलब आई गेस देन मैं आपको बिल्कुल हेल्प करता हूँ, शायद किसी को रेफर करता हूँ जो आपको हेल्प कर पाए, स्टिल यू हेल्प देम, स्टिल यू बी ऑन देयर साइड, but you don't take that project to set a value and standard in the market of your own self. So आप एक बॉम्ब ड्रॉप करोगे, वो एक अनदर बॉम्ब ड्रॉप करेगा, so उसका और नीचे चला जाएगा बॉम्ब, so they will be like अभी जेपेग भाई डॉट जेपेग भाई अभी सब समझ तो गए, बट दिस 3.5 पेटी will be too much, so 3.5 lakhs will be too much or something like that, then they will put their price maybe around, can we fit, like can we somehow manage this within the budgets of 2 lakhs or something like that. So then you somehow communicate, but you don't discount, but you communicate, okay, so this is where you are like, this is where you are telling this, okay,
maybe we prioritize the project, maybe we pick up one at a time and then take up the another one. So that will put you in the comfortable position to clear the retail first, maybe the B2C one first, and then you can give that decision. Okay, let's not go ahead with both B2B and B2C. Maybe pick up one at a time and give the complete justice, and then move on to the B2B one and give the complete justice to that. Plus, I'll also make sure that I give you a little comfortable payment timelines and structure that will also again put you in a better position to, uh, you know, break that investment into a comfortable installment, so that it's not very maybe difficult for you upfront or something like that. Why don't you, um, let's close this at, for example, if you are telling 2 lakhs, right? So let me go back to my drawing boards, let me see, analyze, and get back to you maybe how I can maybe accommodate in this. Or if not, I'll be very upfront with you that if I feel, no, let's go together, दोनों को parallelly हम लोग करते हैं, because strategy करेंगे तब दोनों एक साथ हो सकते हैं solve. And design execution, maybe we have the right bandwidth and team available. So it's not that we are not prepared to do this at once. It's just maybe you get some breathing space. So maybe we can pick up one project at 1.5 lakhs right now, and let's pick up the another project at 1.5 lakh. But 2 lakh, and which you are saying for the both, is very difficult for us. And like maybe not 3.5 lakh, but 3 lakh is something that will put me in a comfortable position to really take up your project. And maybe because I cannot work, like I'm not someone who works with unlimited I mean, we have this multiple. So I am someone who picks up very quality projects, and you show that prospect के आप भी बहुत sure हो कि आप किस client के लिए काम करते हो. And because you are doing such a great, and you are such a great human being, I love your vision, passion. I've seen that you have done this so far on your own, offline. It's just a matter of time that you need some hand holding and you will fly even in the online market. तो जब आप सामने इस तरह कम्युनिकेट करते हो, तब जाके you don't have to, अभी उसने बोला 2 पेटी में, मतलब 2 लाख में दोनों करके दे, तो you are not obliged to do that. You आपने but initiate आप करना एक बार, you initiate that this is what the figure is, and bracket से चालू करना. So थोड़ा एक, जब दोनों बॉम्ब फूटेंगे ना, कि आपने बोला somewhere around 2.5 lakh to 3.5 lakh bracket, and then another, so they are like, no, somewhere between 1.75 to 2 lakh में दोनों अगर possibilities है तो then एक आपका जब बॉम्ब ड्रॉप होगा ना, तो एक साइलेंस तो आएगा थोड़ा रूम में. when you talk money, you see that a natural silence that comes when you say, okay, so 2.5 lakh to 3.5 lakh, and then there is some silence. बट हाफ ऑफ द टाइम क्या हो जाता है कि ये जब साइलेंस आ जाता है ना, तब हम ही थोड़ा वो कर जाते हैं, मतलब are you fine, but like if you feel that this is too much or something like that, so you put yourself in that confusing position. So somewhere you have to let that silence be, let that prospect digest what we have said, let him somewhere digest that and take it in. And it's okay, he will definitely come up with his another bomb, which of course will be a lower price. But then you again bounce back and say, no, maybe this is how we can go about this. Take up the first, then take up the second, plus you give them some comfortable in timelines in terms of installments or payments, plus you somewhere tell them that how you are also selective when it comes to selecting the clients. You would love to work on the project, and you know that you will be able to justify the project, but this amount will put you in a comfortable position. This amount will put you in a comfortable position to take up the project, plus deliver the right quality and ideas which you have in the mind. If not given the right amounts, unfortunately you won't be able to do it, because then your resources won't allow you, because आप
कम रिसोर्सेस में उतना डिलीवर नहीं कर पाओगे. सो आपको भी राइट रिसोर्सेस लगेंगे, and you will block your time, right? This is very important word. मतलब you will block your time for him or her. and अभी यहाँ पे .jpeg will be like मैं खास आपके लिए इतना मेरा टाइम भी ब्लॉक करूंगा, प्लस मैं डेडिकेटेडली इतनी वैल्यू दूंगा आपको. and this is the price that will put me in a comfortable position, and trust me, this is a lucrative deal for you, plus comfortable for me as well to block my time and take up this project and solve this problem for you. So थोड़ा bombing होगा, and then एक साइलेंस भी होगा. embrace करो साइलेंस को, let it be, right? नहीं अटकानी है वीडियो. ऑलराइट, सो एक साइलेंस जब होती है तब एक ह्यूमन नेचर है कि हम भी ब्रेकआउट कर जाते हैं कि यार अरे नहीं नहीं आप चिंता मत करो, ऐसे हम थोड़ा आप बता दो आपका बजट कैसा है, मैनेज कर लेते हैं. तो दिस बिकम्स वेरी cheapo conversation. So let him digest, and then you somewhere talk bracketing. आप अपनी इंडस्ट्री में कभी भी एक फिक्स प्राइसिंग नहीं होती किसी भी चीज की, एंड एक प्राइस रेंज विल ऑलवेज अलाउ यू टू एक रेंज होगा, तो इट विल अलाउ अ ह्यूमन ब्रेन टू इवन उसके हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए कि यहाँ से ओके सो यू स्टार्ट from 2.5 lakh to 3.5 lakh, it depends. मतलब then we will also figure out कि क्या कैसे करना है. So एक bracket होता है तो सामने वाले को भी एक अंदाजा आ जाता है. And then master the number. Master the number मतलब you have to be very comfortable when you speak that number. So ये आपको once you have such conversation, you will maybe if you are at 10-15,000 right now, maybe you are at 30,000 right now. Talk 50 as a number, talk 50 to 75 as a number. If you are at very like, but make sure that you are covering what we have discussed when it comes to deliverables. You have to deliver the right value. So maybe you are at 10-15 right now, start with 35 to 50, right? So you have to drop a bomb. Unless you don't drop that in a conversation, and just drop that, and maybe the first conversation, second conversation, third conversation, there is no other way. You will have to do that real time and somewhere get out. I was a creative person only. मैं डरता था प्राइस बात करने से, and I always, but fortunately I had co-founders who were good with negotiations, and नहीं तो दिक्कत होती. But ultimately when I saw, despite having someone, right, so people sometimes expect there were cases जब मीटिंग्स में मैं ही जाता था एंड मुझे बात करनी पड़ती थी इन चीज़ों के बारे में, तो आई वॉज इन अ सूप, एंड देन आई अपस्किल्ड एंड रियलाइज कि नहीं यार ये बहुत ज़रूरी है. ये तो मेरी रिस्पेक्ट डाउन हो रही है वहाँ पे. बीइंग द co-founder and partner, I am not being able to communicate other parameters as well. So I guess I'm just a font and color guy. So तो वो नहीं रहना है मुझे भी अपस्किल करना है, क्लोजर्स सीखने पड़ेंगे मुझे, ये तो दिक्कत हो जाएगी. सो या be comfortable with the number you speak. You yourself should not be like आपको एक confidence नहीं है वो number बोलने में, तो वही आपको माप लेगा कोई भी सामने तुरंत. So be comfortable with the number, and it will come through real time conversations only. There is no other assignment for this. So I'll help you in the real time, I'll help you in that as well, but somewhere you have to make sure कि ये thumb rules आप धीरे धीरे एक एक करके टिक करते जाओ, एंड देन मार्जिन्स गिव अस अ ब्रीदिंग स्पेस. अब क्या हो जाता है ना, मे बी यू आर वर्किंग विद इन 5-10,000 टाइप्स, यू ऑल्सो अगर कुछ इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस, इट हैज सम एक्सपेरिमेंट्स, समटाइम्स सम थिंग्स वर्क, समटाइम्स सम थिंग्स नीड मोर टाइम, समटाइम्स कुछ करेक्शंस के बेसिस पे कुछ हमें मे बी कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्स लग जाए, डिपेंड्स, एनीथिंग कैन हैपन. तो थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस रखना पड़ता है. If you start, you have to talk price first, and you have to talk, मतलब उसको थोड़ा आपको एक ऐसी ब्रैकेट देनी है जो आपको भी अच्छी मार्जिन प्रोवाइड करे वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. नहीं तो क्या हो जाएगा कि आप अभी अंडर वैल्यू में बेच दोगे क्लाइंट एक्वायर करने के लिए. एक्वायर करने के बाद आपको जब जेब से कुछ थोड़ा डालना पड़ेगा ना, कुछ उसको सस्टेन करने के लिए, तो तब आपको पिंच करेगा.
या जब क्लाइंट एक या दो चीज ऐसा रिलेशन में कुछ मांग लेगा या कुछ उसमें और एडिशन कर देगा, हो सकता है स्कोप ऑफ वर्क इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव आपका डन है, बट लोगों शायद वो आउट ऑफ द वे कुछ ज्यादा ना मांग ले, बट थोड़ा बहुत अगर समझो उसने बोला है पैकेजिंग डिजाइन है, मतलब 2 फ्लेवर्स कैन यू प्लीज इंक्रीज, मतलब सिर्फ 2 फ्लेवर्स का आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, 3 फ्लेवर्स का एक्स्ट्रा कर सकते हो, तो आपको तब वो छोटी छोटी चीजें फिर आप नजर नहीं करोगे। आपने एक बार मोटा अमाउंट दिया, मोटा प्राइस आपने थ्रो किया, आपको भी पता है नाउ यू आर इन अ कंफर्ट जोन टू डिलीवर द राइट टाइम एनर्जी बैंडविथ टू दिस प्रोजेक्ट, प्लस थोड़ा ऊपर नीचे कुछ ग्रे एरिया ऐसी आई जहाँ पे अपने को थोड़ा देना पड़ा ज्यादा, तो मुझे पिंच नहीं करेगा बिकॉज आई हैव द मार्जिन्स टू सपोर्ट मी। उसके बिना यू विल नेवर बी एबल टू सर्वाइव और यू नो सस्टेन। सो प्लस आपको भी मजा आएगा, you will have that positive vibe for the project, for the prospect, because they have paid you. And for the uh, entrepreneurs in the room, like my mentor always said me that and he is the first one I've met that who never negotiated. So he felt that अगर मुझे एकदम चीप बिल आता है ना किसी का, कि इनवॉइस आता है सॉरी, कि ये एकदम इतने में होगा, तो वो सोचने में लग जाते हैं कि इतने में वो खुद कैसे सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा है हम लोग को, उसको कैसे परवड़ रहा है, राइट? सो गुड क्लाइंट्स और प्रोस्पेक्ट्स आर ऑलवेज समवन हु विल थिंक दैट उसको भी कैसे परवड़ रहा है इतने कम प्राइस में, एंड देन दे आल्सो जज कि इतने में फिर वो क्या ही मुझे प्रोवाइड कर लेगा। and when they get such invoices, for example from .jpeg by budgetia ji got, अरे 2.5 lakhs is telling, and फिर कुछ तो सोच के ही बोल रहा है ना, मतलब अगर इतना मांगने की वो डेयरिंग रख रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस प्राइस बहुत कुछ बताता है, उसका कॉन्फिडेंस बताता है, उसकी एक्सपर्टीज बताता है। एंड देन अगर एंटरप्रेन्योर भी निगोशिएट नहीं करता है फॉर एग्जांपल, तो सामने वाले सर्विस प्रोवाइडर के पास अपार्ट फ्रॉम डिलीवरिंग द वैल्यू कुछ ऑप्शन नहीं बचता है। सो हाँ, अगर निगोशिएट करता है और समझो बोल रहा है कि नहीं यार एक पेटी में कैसे भी 1 लाख में कैसे भी करके ये करके देने का ट्राई कर, सो देन अगर कुछ रॉन्ग हुआ आगे पीछे हुआ तो सर्विस प्रोवाइडर के पास एक स्पेस आ जाती है कि नहीं अभी आपने तो ये प्राइस कही थी और आपने ऐसे कहा था, तो इतने में तो मैं इतना कर पाया, या वो हो गया या ये हो गया, रीजनिंग्स एक्सेट्रा, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। सो इफ यू डोंट नेगोशिएट, the service provider is only left with one option, which is delivering, and if they don't deliver, then of course you're not going to release the payments which are pending, or which you ऐसा case होता नहीं है, because anybody who is demanding a right value will definitely invest the right talent and resource that he or she should, and make sure that you get the value। and वो अगर वैल्यू आप अभी जैसे आप ऐसी धीरे धीरे पिच करना जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे हाई टिकट पिच अगर कर रहे हो, आप भी अपने आप को इतना अपस्किल करोगे, राइट, कि मैं अगर इतना पिच कर रहा हूँ तो मैं भी सही वैल्यू ही दूं मार्केट में, उसके अलावा नहीं दूं, नहीं तो फिर ये रह के मतलब क्या, नो कोर्स कैन हेल्प यू टू लेवल अप। सो या, so margins give us a breathing space. Numbers speak a lot. They speak about your expertise. They speak about your strength, how your experience, your everything. So it's like that. Like all these seniors in the industry, all the agencies in the industry are doing really very well. Have mastered these thumb rules like anything. And with each and every prospect and client, we all get better and better. Even we are getting better and better with in these thumb rules as we speak. We are also getting better and better with each passing prospect when we deal in our day-to-day life. So a very basic problem, that price is too high. अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा मस्ती किया है, I mean, and I wanted to keep this very intense conversation because that's how it will be. So the price is too high is what we always listen from the prospects, those who want to buy. अभी price is too high, तो आप इसका कॉस्ट इमेजिन कर लो, जैसे हमने बात की थी। अगर आप ये चेक कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि वो प्लेटफॉर्म्स आपको हेल्प कर लेंगे और आप टी शर्ट्स बेच लोगे ऑनलाइन, so please go ahead. I mean, when you say price is too high, somebody says you don't react
कि नहीं यार मेरा तो इतना टीम लग जाएगा, इतना मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये है, वो मत करो, क्रिप मत करो. Okay, so you feel that it's too, maybe it's too high, you feel it's too high, but trust me, I'm giving you the best investment I can offer you. And I like the value that I bring on table. You calculate this with, like, now you tell me, Mr. Budgetia, के अगर आप एक जो टी शर्ट, मतलब आपका जो टी शर्ट है या प्रोडक्ट है उसका एवरेज प्राइस मुझे बताओ. लाइक इफ ही सेज दैट मैं सिर्फ टी शर्ट्स तो नहीं, उसमें हुडीज है, हुडीज काफ़ी मेरी अच्छी चल रही हैं, और हुडीज करीबन मेरी 1,000 रुपए की तो एवरेज प्राइस आप पकड़ लो. तो अगर आप 1,000 हुडीज 1,000 रुपए की, अगर आप कम से कम कितनी आप कर लो कैलकुलेशन. देखो मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया रखो, मेरा राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन वाला मामला है मैथमेटिक्स में. सो व्हेन यू सी 1,000 हुडीज अगर आपकी बिकती हैं 1,000 रुपए के हिसाब से, तो भी आप कितना 10 लाख का रेवेन्यू कर लेते हो, राइट. तो आप ये फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस की बात हुई. एंड ये सिर्फ मैंने एक प्रोडक्ट की बात की. जो मैं आपको बात कर रहा हूँ वो हम कंबाइंड आपके B2B B2C की बात कर रहे हैं, जो करीबन 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में बात हो रही है. तो आप इमेजिन करो ना, जो रेवेन्यू आप करने वाले हो, जो टर्नओवर आप करने वाले हो, उसके अगेंस्ट आप तो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एसेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मेरे साथ. बट अभी प्लस वो आपको, आपका वो ऑब्जेक्टिव मीट हो, उसके हिसाब से मैं काम करूंगा या करूंगी आपके साथ. आई एम नॉट दैट जो कोई आपको खाली एक ग्राफिक एलिमेंट बना के दे रहा है. सो अगर आप मेरे साथ ऐसे सही काम नहीं करोगे, मेरे प्रोसेस के साथ, मेरे कंसल्टिंग के साथ, मेरे डिजाइनिंग के साथ, तो आप कॉस्ट इमेजिन कर लो उसका. फिर आपका ये रेवेन्यू कैसे ब्लॉक होगा, आप कैसे ये रेवेन्यू हिट कर पाओगे, या किस तरह मार्केट में पेनिट्रेट कर पाओगे. सो make him understand the cost he will have to bear if he's not investing this amount with you, right? So don't react, always talk business to them. They have that understanding of numbers, so we better get strong with numbers. I'm still doing that. Like, I just need help with the quick, I always keep calculus with me which help me. So yeah, it's just I'm good with that, it's just that I need calculators handy with me. I'm not very quick with mind में ही calculate कर लिया type. पता नहीं यार कहाँ कहाँ पहुंचा है. क्रिएटिविटी वाइज तो सॉर्टेड है, इसमें कैलकुलेटर का थोड़ा हेल्प ले लेते हैं. लाइक नेवर डिनाइंग दिस. सो I have a guy to do this in this much amount. या तो you have this price is too high, या तो you have I have a guy. अभी I have a guy, somebody always have a guy. तो फनी कन्वर्सेशन मैंने सुना था कहीं. फनी कन्वर्सेशन ये है कि इफ यू हैव अ गाय एंड इफ यू फील के वो ये सब आपको डिलीवर कर पाएगा, जो कमिटमेंट मैं अगर इतना आपसे डिमांड कर रहा हूँ एक वैल्यू, तो मैं भी कमिट हो गया ना आपको वो वैल्यू डिलीवर करने में. एंड अगर मैं वो नहीं कर पाया वैल्यू डिलीवर, राइट, सो मैं कुछ भी, मैं थोड़ी वो प्रोजेक्ट छोड़ूंगा. मैं आपको जब तक आपको जस्टिस ना मिले मैं भी उस पर इतना कमिटेड रहूंगा. एंड वो अगर हाई क्वालिटी का काम जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो अगर योर गाय विल बी एबल टू डू दिस, देन आई विल हायर दैट गाय टू. अगर आपको वो इतने में इतना करके दे रहा है तो, जितना मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको वो इतने में इतनी सर्विसेज, मतलब जो मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ वो प्रोवाइड कर रहा है, get that guy. Once you complete your project, please, if everything goes well and if you feel you got the value, रिकमेंड मेरे को भी कर दो, मैं उसको हायर कर दूंगा भाई, कि मैं उसको प्रोजेक्ट दूंगा मेरे के इतने में कैसे कर पा रहा है वो. सो यू समटाइम्स हैव टू इग्नोर सम थिंग्स, समटाइम्स यू हैव टू क्रैक अ जोक, थोड़ा सा मस्ती मजाक, सो दैट माहौल हल्का हो जाए. जो इंटेंस था साइलेंस हो गई थी. सो बट यू डोंट हैव टू be obliged to take that deal just because you are in that room and अरे नहीं यार आज तो भले ये बोल रहे हैं लाख, तो लाख रुपए में लास्ट में तो लाख रुपए में भी क्लोज करके उठ जाएंगे. ऐसा नहीं. वो थोड़ा सा आपका फिर वो भी फिर दिक्कत हो जाएगी. सो somehow you have to, I have been, as I'm saying, I'm still practicing the thumb rules. I've somehow nailed them, and it's a tough journey. It's only happens with the real time
experiences in the meetings, the Zoom calls or whatever, offline, online. But once you start having conversations with the prospect, this will really change your life slow and steady. Once you nail these thumb rules. So whenever somebody says your price is too high, imagine the cost that it will lead अगर उन लोग इतना invest नहीं करेंगे. Plus, if somebody says I have a guy, you somehow crack a joke, but don't buy that point, right? So you don't have to. Sometimes you have to don't buy or ignore or don't pay necessary attention of to that prospect when somebody says like that. You know, so वो sentence पे उतना necessary attention मत दो. So you have to stick to your commitment and your offering, right? Then you also ask them, say what is your evaluation criteria like? मतलब इतने लोग हैं market में, आप हमारे साथ ही क्यों जाना चाहते हो आगे, और हमारे साथ ही क्यों काम करना चाहते हो, और हमारे साथ अगर क्यों काम नहीं करना चाहोगे, मतलब what is stopping you? If it's something is stopping you to work from us, तो वो क्या है जो stop कर रहा है? If something is अगर आपको लग रहा है कि हमारे साथ ही आगे जाना चाहिए, तो वो क्या क्राइटेरिया है ऐसा? अगर आप मल्टीपल एजेंसी से बात कर रहे हो तो आपके इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज क्या है? तो इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज मतलब वो बोलेगा कि यार एक तो ई कॉमर्स बैकग्राउंड से होना चाहिए, ई कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो मुझे ट्रस्ट नहीं आएगा कि वो रियल एस्टेट में तो ये सब करता है बट रिटेल एंड ई कॉमर्स में मुझे हेल्प कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द बैकग्राउंड ये इंडस्ट्री से हो. आई एम अगर अगर कुछ ने बोला आई एम लुकिंग फॉर द चीपेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, so you have to, then that is not your client, because anybody who will find the cheapest possible option, then not necessarily that will be the best for him or her. So evaluation criteria are justified when you talk experience, when you talk team strength, their team strength and infrastructural and delivery capabilities, their expertise in that sector, their maybe उतने प्राइस वैल्यू में उन लोग सर्विसेज में क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, जो सर्विसेज वो उसमें ऑफर कर रहे हैं वो थोड़ी आपसे ज्यादा हो सकती हैं या आपसे कम हो सकती हैं, डिपेंड. सो इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज अंडरस्टूड, मतलब दिस आर जस्टिफाइड इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज, बट द लीस्ट पॉसिबल जिसका होगा उसको हम काम देंगे. इफ दैट इज द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, देन you, I mean, the whole agenda of doing these sessions are के अभी वही रैट रेस में अपने को रहना था, तो फिर डिफरेंशिएशन, एक्सपर्टीज और पोजीशनिंग करके हमें अपने आप को क्या फिर अचीव कर लिया, राइट? सो जस्टिफाइड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया समझने का ट्राई करो अपने प्रोस्पेक्ट से, अंडरस्टैंड कर. अगर उन लोग आपके साथ जाना भी चाहते हैं तो समझो दे विल स्पीक समथिंग गुड अबाउट यू, दैट नो वी लव द approach that you take towards the project. आप इसको खाली एक डिजाइनर एंगल से नहीं देख रहे, बिजनेस एंगल से भी देख रहे हो. So you somewhere try to gauge all these things. ये आपके ईमेल्स पे नहीं होंगे, या पता है वो व्हाट्सएप पे कुछ कन्वर्सेशंस होते हैं, फिर आप किसी को अपना कुछ प्रेजेंटेशन भेजते हो, फिर वो कुछ रिवर्ट देता है, कभी नहीं देता है, आपने डायरेक्ट कुछ पैकेज बना के भेज दिया बिना ये सब एनालाइज किए, तो why will he really give you the business? So without conversation and knowing all these parameters, it is very difficult. Plus, some people will be like, अरे अरे आप percentage में आ जाओ. We have been, you know, in a trap in before as well. So don't fall into all these traps. Rather percentage. So yeah, I'm not telling that that is Budgetia ji can be like, why don't you come on percentage with me? Like जो सेल होगी उसका आपको मैं परसेंटेज दूंगा. फिर यू विल बी लाइक अच्छा परसेंटेज दोगे, देन आई विल बी पार्टनर फॉर योर लाइफ, मतलब तो पूरा लाइफ टाइम के लिए मैं पार्टनर बन जाऊंगा. जितनी सेल होगी मैं लेते जाऊंगा उसमें से, पर सेल मेरा इतना 10% पर प्रोडक्ट सेल पे मेरा हक बनेगा. फिर मैं आपसे अभी चार्ज नहीं करूंगा, फिर तो मैं आपको बिना कोई चार्ज करके दूंगा ये चीज. तो देन बजट आपको थोड़ा उसी को पिंच करेगा. देन यू नो वो खुद ही अपने मुंह से कहेगा कि अरे यार, देन यू विल बी लाइक नहीं चलो 2 साल के लिए मैं बस उसमें से लूंगा जब तक, या 3 साल के लिए लूंगा. तो ऐसे अगर मैं 10% पर प्रोडक्ट में से लेते गया तो मैं तो आराम से 10-1 लाख तक कमा लूंगा आपसे, रेदर देन या आप मुझे अपफ्रंट अभी 2.5 लाख रुपए जो मेरे बनते हैं, 2.5 से 3.5 लाख रुपए का जो रेंज है उसमें हम जो वर्कआउट करेंगे वो अगर आप अपफ्रंट देके आप फ्री हो जाओ, देन सारा प्रॉफिट्स आपका है. आपको क्यों मुझे अननेसेसरली परसेंटेज में इन्वॉल्व करना है?
जो चीज वन टाइम परसेंटेज में नहीं इन्वॉल्व की जाती है, वन टाइम जो चीज आपकी इन्वेस्टमेंट है वो, सो वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह कंसिडर करो। आजकल के जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाले हैं उनको भी परसेंटेज पे लेने लोग डिनाई कर रहे हैं, बिकॉज यू नेवर नो, जब स्केल इंक्रीज होता है ना तब सारा पिंच करता है। स्केल इंक्रीज मतलब आज 50 हुडीज बिक रही हैं तब तक प्रॉब्लम नहीं है, जब 5,000 हुडीज बिकेंगी, 5 लाख हुडीज बिकेंगी, तब ये सब पिंच करेगा। तो नो बडी, ये सब कोई थ्रो कर देता है कभी कभार कोई प्रोस्पेक्ट, मैंने ऐसे ही ये पॉइंट रखा बिकॉज होता है कभी किसी के साथ, बट यू डोंट फॉल इनटू ऑल दिस ट्रैप्स एंड यू टेल, क्लाइंट के मुंह से ही आप बुलवा लोगे कि आप ही अपना वो कर रहे हो। इफ यू आर अ डिसेंट बिजनेसमैन एंड आई नो दैट यू आर अ डिसेंट बिजनेसमैन, सो यू वोंट टेक सच डिसीजंस, सो you will always pay what the fee is there and you get free from it, so rather than doing all this percentage thing, but yeah, any given day, रिस्क जिसका ज्यादा रिवॉर्ड उसका ज्यादा, so रिस्क वो ले रहा है आज, आपकी रिस्क नहीं है, आपको आपका फ्रंट मिल रहा है, उसमें भी अगर आप कुछ रिस्क ले रहे हो तो शायद आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिले उस चीज का। बट आई एम all I'm trying to put here is that let's be fair, let's be honest, let's have a fair, value which we give on table and take the right value and focus on that is what I would like to put as of now, as of now। एंड जैसे आपने देखा ये सारा कम्युनिकेशन जो हम थंब रूल्स देख रहे हैं ये सारे नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल मतलब वी हैव नॉट डिस्कस्ड एनी positioning or personality or brand guidelines or spacing in a logo or all this, matlab, or if it's a web project we have not discussed html files or what will be the back end, front end, etc. Any pitching that you do, any closure that you do will not involve technical conversations, because it is all about human to human conversation, आइस ब्रेकिंग एक दूसरे के बीच में, वो आपको जान ले हम उनको जान ले, ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करवाना एंड अपनी वैल्यू बाउंड्रीज ड्रॉ कर लेना, क्योंकि आपका और आपके क्लाइंट का रिलेशन कैसे होगा वो वेरी फर्स्ट मीटिंग से डिसाइड हो जाता है। अगर यही मीटिंग से आपकी अथॉरिटी मिसिंग है तो पूरे आगे प्रोजेक्ट में आपकी अथॉरिटी मिसिंग होगी, देन वो डिक्टेट करेगा सारे टर्म्स। बट अगर आपकी अथॉरिटी यहाँ पे दिख रही है कि आप एक्सपर्ट की तरह क्वेश्चंस पूछ रहे हो, डायग्नोसिस कर रहे हो, थोड़े बहुत सॉल्यूशंस भी बता रहे हो, बट देन लाइन भी ड्रॉ कर रहे हो कि यू नीड टू गेट पेड फर्स्ट, देन आप बजट्स भी क्लियर कर रहे हो, सेट कर रहे हो, आपको अपने माइंड में भी क्लियर है कि आपको क्या प्राइस ब्रैकेट्स मुझे पता नहीं है, आप इतने कॉन्फिडेंट भी हो कि इतना वैल्यू भी चार्ज कर रहे हो, प्लस आप मुझे भी एज अ क्लाइंट भी आप उसे असेसमेंट कर रहे हो कि वो आपके लिए राइट फिट है और आप उसके लिए राइट फिट हो के नहीं। So this shows your maturity and professionalism and experience that you are not some not Tom, Dick and Harry in the market. You have the technical know-how and technical conversations, मतलब ये सब नहीं होता फिर ये negotiation में, वो सब बाद में आता है। Once all this is set, the parameters are set, then you have, then क्या, then तो it's easy ना, then you know that अभी नहीं तो आधा टाइम तो हमारा स्कोप ऑफ वर्क बनाने में जाएगा उन लोगों के लिए जो लोग शायद कभी रिवर्ट ही ना करे, जो हमारे पास कभी आए भी नहीं काम मिलने के बाद में। तो ये जो इनिशियल कन्वर्सेशन है ना वो बहुत जरूरी है हमें करना विद प्रोस्पेक्ट, जिससे हम उसे माप लेंगे पूरा। एंड देन डेमोन्स्ट्रेट वैल्यू मतलब यू हैव टू वॉक द टॉक, you need testimonials backing you, you need client references, जरूरत पड़ी अगर तो वो आपके कोई प्रीवियस क्लाइंट से भी बात कर सकता है कि आपके लिए उसने कैसे काम किया था, पॉसिबल है एंड बिल्कुल करते हैं लोग। सो आप कितना एकदम बढ़िया रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो अपने क्लाइंट के साथ, आप जिनसे काम करवा के लेते हो, शायद कि एक दो जन के साथ कोलैबोरेट किया होगा, उनको आप पैसे देते हो नहीं देते हो टाइम पे, आपका क्या क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, आप जिस काम कर रहे हो वो बहुत डिटरमाइन करेगी ये सब क्लोजर्स में। तो आप कितनी आपने एक अभी जैसे डॉट जेपेग भाई बजेटिया जी का काम लेंगे तो बजेटिया जी को राइट वैल्यू उन्हें देनी पड़ेगी और देना ही चाहिए, एंड प्लस रिलेशनशिप भी प्रॉपर मेंटेन रखना चाहिए एंड सही तरह हैंड ओवर करना चाहिए प्रोजेक्ट का टेस्टिमोनियल्स के साथ। मतलब सामने वाला क्लाइंट जो है बजेटिया जी भी दो बात बोले जेपेग भाई के बारे में, नहीं मुझे इसने यहाँ पे अच्छी मदद की, यहाँ पे ये इम्प्रूव कर सकता था, लेकिन स्टिल इसने पूरी अपनी कोशिश की है ये एरियाज में,
सो टेस्टिमोनियल्स से केस स्टडीज है प्लस उसका टेस्टिमोनियल भी है प्लस आपकी रिलेशनशिप भी बहुत बढ़िया है एक पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ, प्रीवियस क्लाइंट के साथ, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू यू नो acquire further decent clients. So you have to demonstrate with your previous project, but you have to start somewhere. In order to start somewhere, maybe the first नहीं but second one आपका और थोड़े better value पे आप उसे close करोगे. So maybe आपका jump एकदम jump नहीं रहेगा. आज आप 10,000 पे हो तो आप 30 quote करो, 30 to 50 में खेलो. 30 पे हो तो 70 to 80-90 पे खेलने का ट्राई करो. तो धीरे धीरे आप धीरे धीरे करके आप ऐसे ग्रेजुअली अपने ब्रैकेट्स इंक्रीज करो. जैसे आपका एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज डेप्थ में जा रहा है और बढ़ते जा रहा है इंडस्ट्री में और आप राइट वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हो तो एंड डेमोन्स्ट्रेट करो. डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखना चाहिए, वो खाली आपके कन्वर्जेशन में है बढ़िया बट देन जरूरत पड़ी हो अगर देख रहा है रिकमेंडेशंस किसी प्रीवियस क्लाइंट्स के तो बहुत जरूरी है वो आपके पास होने. So thus you need to focus on building this as well along with the case studies. Then don't get into hourly stuff. Hourly stuff is absurd. It's all about the value that you offer. अभी आप वो कितने टाइम में कर रहे हो that is your expertise. आप 10 मतलब कोई भी चीज एक आप 1 hour में कर लेते हो या उसको it takes 1 day 1 week, depends on your challenge magnitude, depends. So nobody charges hourly. It's all about okay, this is the project value, this is the best. अच्छा प्राइस में आपने क्लोज किया, फिर कुछ उसमें छोटा मोटा आ रहा है एडिशंस आप करके दे देते हो, फिर उतना इन डेप्थ आप इतना माइक्रो में नहीं देखते हो एंड अच्छा वैल्यू देते हो सामने वाले को, उसको भी मजा आया नहीं मेरा इतने इन्वेस्टमेंट में मेरा एक ब्रांड एटलीस्ट फाउंडेशन मुझे बन के मिल गया, अभी क्या है मुझे फुल लाइफ इसको सेल ही तो करना है राइट. सो उसके लिए तो एक एसेट बन गया ना. सो कंसिडर लाइक दैट. सो ऑलवेज value is greater than our no hourly pricing and etc. Hourly it can be only for some assignments. I don't know. I mean, I don't want to comment on that, but let's not get into that conversation of hourly prices. Value always comes first. जैसे मैं अगर कुछ आपको वैल्यू अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, so that is more important. अभी वो कितना मतलब वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है राइट, कि rather than counting some hours. So it's like that. Plus don't be sorry. मतलब जितना आपकी क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट का टाइम इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है. ऑल यू आर एक्सचेंजिंग इज टाइम एंड एनर्जी. सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड डोंट बी सॉरी फॉर चार्जिंग the amount. Don't be sorry for asking the upfront amount. Okay, this will be the first installment and this will be the first investment transaction that will help me confirm your deal. So don't be sorry in your tonality. Be very neutral and the way you are and the way you should be, and like a decent freelance artist, a commercial artist, freelance designer, you have to have money. You need to talk money and there is no shame about it. So don't be sorry for that. Be polite. By being polite I mean you have to be a human at the end of the day in a meeting. Don't be a pushy salesman is all I would say. Be polite. अगर बात नहीं भी बनी still you help them, recommend them, कुछ तो उसे मदद कर दो जिससे उसका एक गाड़ी चल जाए, आगे बढ़ जाए. You are not obliged but हो सके उतना किसी को भी हेल्प कर लो and polite रहो. It's not about just closures. अगर नहीं हो रहा है मतलब still you don't end the meeting on a very silence वाले मोड में ना कि नहीं यार प्राइस नहीं जमा छोड़ दिया. Still maintain relation. You never know. आज नहीं तो कल उसके पास जब मे बी बजट हो या बजट आज नहीं है तो कल बजट होगा तब आपके साथ काम करेगा बिकॉज आपने उसको कंसिडर किया. यू आर सो कंसिडरेट इन दैट कन्वर्सेशन. सो बी पोलाइट. देन discounting is something which is not at all advisable because then it will really आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है वो पता चल जाएगा उससे. negotiations are fine, see, because that's why you have bracket. बराबर. सो दैट्स व्हाई यू हैव अ सर्टेन ब्रैकेट जिसमें आपने पहले ही एक रेंज डिसाइड कर लिया तो आप उसमें प्ले अराउंड कर रहे हो. इट्स अंडरस्टूड डिपेंडिंग ऑन द स्कोप. बट एकदम ही ड्रास्टिकली डिस्काउंट कर देना अपने आप को एक प्राइस कोट करने के बाद, दैट विल
मेक अ फूल ऑफ योर ओन सेल्फ, फिर वैसे हो जाएगा, एंड देन वो 2 जन को और बोलेगा कि ये ऐसे हो गया, तो यू नो देन that is not gonna help. I got like I still remember, despite having good like I was very sound in one particular group, and despite knowing that, I reached out to a agency who was very good with copy. बहुत बढ़िया कॉपी का काम है उनका, and लोग they just specialized in they just specialize in copywriting, and I love their work. So मैंने उनको बोला ये है this center, उन्होंने अपना मुझे पिच किया proper amount, and I was like this is too high, मतलब तब मैं वो client बन गया था. And then they did not even revert. They said, no, we will not discount. This is what we don't negotiate. You don't even negotiate. This is the price. This is the value that we will offer. And let me know if you would be okay to go ahead with this. So because they said that, no, we trust and we respect and we have trust in our own work and our own process that आपको output मिलेगा. And हम लोग discounts और negotiations नहीं करते. No reward, no follow-ups उसके बाद. Because that lowers your value only. जितना आप वो करते जाओगे उतना आपका अथॉरिटी कम होते जाएगा. आर यू गेटिंग ऑल दिस? सो ये थंब रूल्स धीरे धीरे हमें टिक करते जाना है, एंड इट्स ऑल वर्ड प्ले. बाय वर्ड प्ले आई मीन यू डोंट टॉक फॉलो अप्स. मतलब फॉलो अप सुन के ही ऐसा लगता है कोई बिजनेस डेवलपर फॉलो अप कर रहा है अपने साथ. सो फॉलो अप वर्ड नहीं यूज करने का. What positive words are you using is more important in the communication and in the meeting that you are having. Maybe you never say that you will get this scope of work from my business development executive. So ये सब थोड़ा बहुत ही सामने वाले को वैसा फील कराएगा कि मेरे को कोई बेच रहा है कुछ. सो डोंट डू दैट. प्लस अरे अपन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं. सो कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो वेरी हैवी वर्ड. Agreement is a very soothing word. Ultimately you are doing that only, but nobody likes ऐसा heavy jargons जो ऐसा feeling दे के आप उसको कुछ बेच रहे हो. Keep it very positive, keep it very neutral, keep it very subtle. The way we are communicating right now, it's very neutral, subtle. It's so white in the screen, clean, positivity. So keep it very न्यूट्रल. वर्ड प्ले, क्या वर्ड्स आप यूज कर रहे हो विल ऑल्सो डिटरमाइन योर क्लोजिंग ऑन अ गुड प्राइस. If you are using the sales word which follow up and all that will kill the deal. So avoid. Use positive words. Find some synonyms if you feel like. जैसे वो agreement वाला हो गया अभी, तो contract बहुत heavy हो गया, agreement is fine. So something like that. Or okay, so let's keep this simple. Like now, मैंने आपको verbally बताया ये हम deliver करने वाले हैं. It will be just a 1 or 2 page max. एक मैं आपको clean एक document just भेज दूंगा. Just a gentle agreement between both of us, so that we are also committed to it. You are also committed to it, and let's get this black and white. तो थोड़ा casually communication करो. That will also impact सामने वाले prospect पे. And then transaction. Nothing works until transaction हुआ है. Like आपको भी सामने वाले की कमिटमेंट चेक करनी है. ठीक है, मीटिंग अच्छी रही, सारा अच्छा हुआ, बट he is only committed after the first installment or the first 50% comes to you. Only then you feel that person is really committed in your offering and the value that you will give them. जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक अगर एग्रीमेंट भी साइन नहीं हो रही है, ट्रांजैक्शन भी नहीं हो रहा है, तब तक आप समझ लो कि सब खाली बस हवाबाजी है. सो समवेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस जर्नी. ये जर्नी हुई तो आपने एक सही चीज क्लोज की है, एंड ये आप धीरे धीरे अभी आगे से कर पाओगे. एंड जो लोग कर रहे हैं इसमें से शायद कुछ मिस कर रहे हो, मे बी उन्हें वैल्यू एड हुआ होगा. जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इसमें, वो भी समझ रहे हैं कि क्यों मैं ये प्रोसेस करूं, एंड मैं भी सामने मेरे सर्विस प्रोवाइडर्स से मुझे ये सब मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आप भी अभी इवेल्युएट कर पाओगे. देन सेट रूल्स स्ट्रेट. नाउ आई हैव बीन सेट बाय मेनी कंसल्टेंट्स व्हेन वी हैव हायर्ड देम. सो once everything is done, in the first meeting they set rules straight. So here's how we'll do this. We'll make sure that the strategies come from our side. You have hired us, you have paid the right amount for it, and we respect your investment. Now when you have invested in us the right talent, let us
do what we are good at, and all your inputs are welcome, your suggestions are absolutely welcome, but somewhere please trust us, like we will act as a fresh perspective, we will act as a neutral person to your business. Maybe sometimes you may take some emotional decisions, but that's our role. We will help you, you know don't take, like you are too invested in that maybe particular thing. We are looking at from a bird eye perspective. So please trust us and let us do our duty so that हम लोग आपके लिए सही काम कर पाए. So first meeting में ही जब आपके ऐसे rules set हो जाएंगे ना कि आप कैसे काम कर रहे हो, क्या होगा प्रोसेस, तो सामने वाला क्लाइंट भी एकदम क्लियर हो जाएगा कि ओ मैन दिस इज टू, मतलब बहुत किक-एस है ये सामने जो मेरे से डील कर रहा है, एकदम थरो प्रोफेशनल है, इसको सब पता है, इसने मेरा असेसमेंट किया, डिस्काउंटिंग नेगोशिएशन कुछ बिलीव नहीं, इसको अपने डिलीवरी पे बहुत ट्रस्ट है, वैल्यू पे ट्रस्ट है, कमिट भी हो गया है अभी इस चीज पे ये, प्लस मैं ट्रांजैक्शन करूंगा तो ये क्लोज होगा, तो बहुत अच्छे से प्रोसेस ड्रिवन बंदा या बंदी है. एंड देन अभी मुझे इससे जो आउटपुट आएगा, आई एम श्योर के बहुत बढ़िया आउटपुट आएगा, बिकॉज आपने वो टोन सेट कर दिया इन दिस मीटिंग, राइट. सो देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यू वी ऑल आर इन दिस सेगमेंट जो हम लोग मास में डील नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी. like as you see, either we can deal in mass or we can deal in class, matlab, and we are not selling product, we are selling a creative service. So it is really difficult for us to uh, deal in mass, to be very honest, until unless you are into a tech driven or a SaaS product, matlab सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या कोई टेक पोर्टल है आपका या कुछ बिजनेस मॉडल ही अलग है. वी आर नॉट टॉकिंग ऑल दैट राइट नाउ. वी आर टॉकिंग clients, we are talking, we offering creative services. So class is the only way to define us, and class is the only way जिससे आप उस पर्टिकुलर क्लाइंट को भी उतना जस्टिस दे पाओगे. आप अगर 12 मंथ्स में आपने देखा कि 4 क्वार्टर है, 4 क्वार्टर में मतलब एक क्वार्टर में मैं 2 क्लाइंट को संभालूं, तो 4 क्वार्टर मतलब मेरे 8 या 10 क्लाइंट का मैं टारगेट रखूं 12 महीने में, एंड पर क्लाइंट इतना टिकट साइज का होना चाहिए मेरा, मतलब पर क्लाइंट मिनिमम कम से कम इतना आप डिसाइड करो, 50,000 का एक क्लाइंट होना ही चाहिए, या लाख रुपए का एक क्लाइंट होना ही चाहिए, या 25,000 का एक क्लाइंट होना ही चाहिए. फिर उसी क्लाइंट को जो मुझे छोट मतलब सर्विसेज, जैसे हम किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हैं, उसका 3 मंथ्स प्रोजेक्ट चलता है, कुछ लोग को रिटेनरशिप पे हम लोग ऑनबोर्ड करते हैं. सो आप जितना हो सके उतना ऐसे प्रोजेक्शन करके क्लास डिफाइन कर लो कि दिस इज द सेक्टर, दिस इज द मीडियम, दिस इज द सेट ऑफ क्लाइंट्स आई एम फोकसिंग ऑन, एंड इतनों को मैं अच्छे से सर्विस करूंगा और अच्छे से जस्टिस दूंगा. इससे यू वोंट ओवर टेक टू मच ऑन योर प्लेट, प्लस प्रोवाइड, अभी इतना वैल्यू आप ले रहे हो तो उतनी वैल्यू भी देने के लिए आपके पास मेंटल बैंडविथ पूरा एंड फिजिकल बैंडविथ, मेंटल बैंडविथ अवेलेबिलिटी होगा, एंड आपका कैलकुलेशंस भी सही फिट हो जाएगा. एंड पैकेजेस जो मैं कहता हूँ ना, पैकेजेस में ऐसे नहीं कहता कि एक वन साइज फिट ऑल सिस्टम आपको चलानी है. पैकेज या एक प्रोडक्टाइजेशन से क्या हो जाता है कि एक लिस्ट ऑफ आइटम्स आ जाती हैं, बट देन इट्स ऑल टेलर मेड सॉल्यूशंस. मतलब आपको 5 या 6 अभी आइटम्स पता है उसमें कि क्या हमें कैसे डिलीवर करना है फॉर एन ई कॉमर्स प्रोजेक्ट अगर कुछ आ रहा है तो, बट फॉर मिस्टर बजेटिया वी विल हैव अ टेलर मेड सॉल्यूशन दैट सूट्स हिज बिजनेस problems and his business needs, right? So you have to select class, be tailor made for that particular client. So with every client, every prospect, your tailor made solutions are tailor made. It's not one size fits all. कोई दूसरा ई कॉमर्स क्लाइंट होगा, उसको रीब्रांडिंग की जरूरत ही नहीं होगी, यू नेवर नो. सो उसका कोई अलग डिमांड होगा, बिकॉज ही ऑलरेडी हैज द ब्रांड राइट. He just needs to get online. Maybe he's just offline. He has the USP, he has the focus. His brand name is awesome. The positioning is there. He just needs to get online, and he needs some collaterals at place, or he needs a little tweak in the complete communication or design. So it's all tailor-made solution that you offer to a prospect that also makes him feel that yes, you have a plan for them.
राइट, मतलब आप कोई पैकेज नहीं चिपका रहे होंगे. आई होप यू आर गेटिंग दिस. सो tailor made solutions is the name of the game, and class helps you to have that skin in the game, and you get committed to that particular client and offer the right value and justify the amount that you have taken. Then the authority, as discussed, मैं पूरे conversation में काफी बार authority discuss कर रहा था. तो अगर आप जब तक अथॉरिटी आपकी, आपको लगता है कि शुरुआत होती है जब आपने काम चालू कर दिया है, बट आपकी अथॉरिटी फर्स्ट मीटिंग जो होगी ना उससे ही जज हो जाएगी. अगर आप कितने आप सबमिसिव हो या कितना आप मतलब सरेंडर हो जाते हो, उससे ही आपका अथॉरिटी पता चल जाएगा. एंड वही आप डिसाइड करेगा कि आगे डिक्टेट कौन करेगा टर्म्स जब प्रोजेक्ट हो रहा है तब. सो इन ऑर्डर टू सेट थिंग्स स्ट्रेट यू हैव टू रियली हैव दिस थंब रूल्स राइट, the tonality right, keep it neutral, keep it subtle, and have a certain authority in anything that you speak, because that is needed to close a client. And then after closing also, this will help you, and he will also listen to you with that confidence. कि आपका confidence दिखेगा, and he will listen to you whenever you give some advice. Not advice literally, but some solution to how you want to do that or solve that. So your authority starts from the first meeting itself, and the journey from yes to no is not easy. मतलब क्योंकि ये case में when you really specialize, when you follow this thumb rules and parameters, काफी नो होंगे, मतलब काफी चीजें आपको पास या टॉस करनी पड़ेंगी. but it's the journey, right? मतलब if you are in a phase 1 right now, do the phase 1. Be the yes man, be the yes woman, just say yes, keep doing projects, do hard work, do everything that you can, build a portfolio, build case studies, build your credibility. करते जाओ, ठीक है, फेस क्लियर कर लो. बट देन एक सैचुरेशन पॉइंट अगर आपको लग रहा है आया है, एंड बारी आई है फेस 2 में जाने की, which is saying no, then you pick up this smooth transition of saying no. But never, I would always, be stable. The finances are important, and ये finances के लिए ही कर रहे हैं. बट जो हमारा करंट अप्रोच है वो थोड़ा फायर फाइटिंग है. हम प्रोजेक्ट आ रहा है, ले रहे हैं, जो पैसा आया रखा, सेव किया, फिर कुछ प्रोजेक्ट आया, ले रहे हैं, किया. तो ये बहुत फायर फाइटिंग एडॉक हो रहा है. अभी जो ये हम बात कर रहे हैं टारगेटेड है, टारगेटेड भी है, प्लस स्पेशलाइजेशन भी है, प्लस मार्केट फोकस भी है, एंड हमारा अथॉरिटी के साथ हम एक प्रॉपर प्राइस भी कमांड करके हम उसे क्लोज कर पाए एक क्लाइंट को. तो ये जर्नी में थोड़े नो बोलने पड़ेंगे. नो बिकॉज अगर आपके जो आपने बॉल पार्क अगर एक सेट किया है कि मैं 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख का अगर डॉट जेपेग भाई बोल रहा है, या अगर जेपेग भाई आज 10,000 पे और अभी 30 to 50,000 पे बोल रहा है, तो अगर कोई स्टिल बोल रहा है कि 10,000 रुपीज, तो आपको तो लगेगा कि नहीं यार, ये तो 30,000 पे क्लोज नहीं हो रहा है, 30,000 इसका बजट नहीं है, प्लस मैं इतना वैल्यू दे रही हूँ तो भी इसको मतलब नहीं करना है. तो आज भी इतने एक्सपीरियंस के बाद, इतने एक्सपर्टीज के बाद, इतना वैल्यू ऑफर करने के बाद मैं अगर 10,000 पे ही करूँ, तो फिर आई गेस मैं नहीं करूँ तो अच्छा है. बिकॉज नाउ मे बी यू कैन अफोर्ड सेइंग नो to this, but somewhere the journey will begin from saying no. So this is a very this transition phase will be a little difficult phase, but get your finances right, get your, I'll never disturb anyone's cash flow. I'll never recommend it. I say this 100 times, but somewhere you have to digest this harsh truth that saying no is the key to justifying your yes, and saying yes to such projects and such clients who really value you and you value them, and you solve business problems and not do some basic assignments. So that's how it is. And then cheers. So अब इनकी बात बन गई है, एंड इनका क्या पूरा आगे क्या टेलर मेड सोल्यूशन ऑफर किया डॉट जेपेग भाई ने, निटी ग्रिटीज में हम आगे के सेशंस में और देखते हैं. एंड प्लस किस तरह डॉट जेपेग भाई अभी बजटिया जी के बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू अ ब्रांड. सो लेट्स से चीयर्स फाइनली. एंड बजटिया जी इज आल्सो कन्विंस्ड विद डॉट जेपेग भाई. उन लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी, बस because he loved his confidence, he loved his nature of educating him and not selling him. He also loved his
अप्रोच ऑफ बीइंग कमिटेड, अभी इतनी हाई वैल्यू कोई मांग रहा है, इसके लिए तो बहुत हाई है बजटिया के लिए. ही विल आल्सो समहाउ मैनेज एंड अरेंज हिज फाइनेंसेस and then get back to him and invest the first transaction, तब असली चीयर्स तो तब होगा जब फर्स्ट ट्रांजैक्शन भी और आ जाएगा, तब वाला चीयर्स है ये. तो सारा ये करेंगे, बट ये थंब रूल्स सारे फॉलो किए गए थे एंड टेलर मेड सोल्यूशन ऑफर किया है बजटिया जी को. तो क्या टेलर मेड सोल्यूशन है वो भी हम आगे देखेंगे. अथॉरिटी भी मेंटेन रखी जेपेग भाई ने. लिमिटेड क्लाइंट्स लेते हैं, इतने प्रोजेक्ट्स नहीं लेते, वो भी अश्योर करवाया सो दैट वो उनको टाइम एनर्जी फोकस दे पाए. ये तो मीटिंग में बहुत कुछ बोला जाता है, बट जब रियल एग्जीक्यूशन की बात आती है तब आपके पास बैंडविड्थ नहीं होता है या प्रॉब्लम होती है तो डिलीवर नहीं कर पाते हो. वो सब नहीं चलता है. बहुत पोलाइट रहे, हम्बल रहे, पॉजिटिवली बात करी, वैल्यू दिखाई प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के थ्रू, केस स्टडीज के थ्रू. टेक्निकल रहा, सुनो टेक्निकल नहीं रहा, सारा नॉन टेक्निकल वे में कम्युनिकेशन किया. सो इट वाज ऑल अबाउट सेटिंग द राइट टोन, ह्यूमन टू ह्यूमन. अच्छी मार्जिन पे क्लोज किया है अभी तो. जेपेग भाई को भी ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी अब सही काम करने के लिए. एंड सो सेट है मामला. So cheers. I hope, I mean, this thumb rules that we discussed in this session, thoda maybe intense hoga ye session, but this was much needed. And let's be uncomfortable. Let's jot them down and start applying these thumb rules slow and steady in the conversations as we have now on. Slow and steady, gradually. Let's gradually upskill, gradually increase the price range and see the change that it brings into our life. It really does. It really affects. Or else, how do you believe that an agencies are being born? मतलब मैं भी एक फ्रीलांसर से कैसे एक स्टूडियो भी बना पाया या टीम भी रख पा रहा हूँ या आगे भी. तो धीरे 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 करके एक एक थंब रूल हम भी क्रैक करते जा रहे हैं. एंड दिस थंब रूल्स वर्क, systems work. So these are the systems or thumb rules which we are discussing and they work. It's just a matter of time. It's just a matter of fact that we start applying them. And if it works for me, it will definitely work for you all. So no rocket science here. Simple, sweet. So cheers buddy. And आगे की जर्नी देखते हैं कि किस तरह, क्या टेलर मेड सोल्यूशन है, पैकेज कैसा रहा है इनका, एंड किस तरह इनका अभी अभी डिजाइन एंड स्ट्रैटेजी की आगे बात आएगी, बड़ी इन डेप्थ में आएगी. एंड हमें हैंड्स ऑन होना पड़ेगा ये असाइनमेंट पूरा केस स्टडी डेवलप करने में. सो एज ऑफ नाउ अभी के लिए लेट्स एंजॉय द चैंपियन एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. चीयर्स एवरीवन. लेट्स फिक्स द ब्रांड फॉर मिस्टर बजेटिया. चीयर्स. अब एक्सपर्ट हो गए हमारे, हाई रेजोल्यूशन में एक्सपर्ट हो गए जेपेग भाई. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. Great. Cheers, cheers everyone. See you in the next episode.